on the comm box. So that's a sign. So Imran Butt, the numbers are good. 25th match. All set and ready with one slip in position. Omar Siddiq on strike. Rawalpindi is elected to bowl first. Right arm over, play. Majid Hussain, the umpire, all set and ready. Play. Bit of a base swing and straight away off the mark with that single from Omar Siddiq. Lahore Blues are 1 for none. Very crucial for them to score points. Both Lahore Blue and White are down at the bottom of the table. Nice shape. Starting from outside leg and finishing it off stump. A little too full. Kashif Ali has been good. And he's got that swing available to him with the new ball. Rawalpindi would look to make inroads, surely. One for no loss. Lahore Blues versus Rawalpindi, a very crucial game. All the sides have played 3 games each, and any loss or win from here will be an actual decider in... Oh, good ball. Oh, very good ball. Maybe did a little too much. Salman has joined us. That's a good start from Pindi. Thank you, Sikandar. And yes, Kashif Ali going wide of the crease and letting the ball swing in a bit too much. Yes, going down the leg for sure. But a good ball, unsettling the batter a bit. And Kashif Ali, very early in his career, has been mighty impressive so far in the domestic season across formats. Good thing for them, they now got Omar Siddiq back. Just strengthens their opening setup. Lahore Blues. We're just talking about, before you joined us, that they've been asked to bat first, and Hussain Talat looking at 150-60. That will require some very sensible batting on this surface. How they play the 3 phases of this 20 overs, and especially that power play to their advantage, and not lose too many, even 7 to 15, that as they have been losing. It's, Sikandar, it's no rocket science. You have to just bat the way batting should be done over a period of 20 overs. And getting to 160 shouldn't be an issue if the batters take the responsibility. So for Lahore Blues, or any team for that matter, to get to a decent total, their batters need to utilize those 20 overs. If you lose too many wickets in the power play, or in the first, let's say 10 overs, you are 4 down, then it is hard to maintain a tempo unless you bat deep till at least number 8 or 9, which in most teams is not the case. They are over-reliant on a couple of players, or maybe one player in case of the other Lahore side like Ahmed Shahzad. This one again swinging in, but nicely played by Imran Butt. Will be a single only. The swing Kashif is getting, just keeping the 2 batters a touch cautious.
Now, this will be a good angle. If Kashif gets it to move in there and off the pitch to the left-hander in the right area, that might create a problem. Takes that edge. Thick one to third and ends the over with a single. It's 3 for none. Let's take a look at the two sides, how the 11s can be compared. Imran Bhatt, Umar Siddiq, solid opening compared to Yasir and Zishan. Yasir is in good form. And also Zishan, both have scored a century in this tournament. And then you move down, Haider Ali, big name, Rizwan Ali, not that big name, but both not firing. Hussain Talat, Umar Amin, two captains, a similar position of play. Umar Amin more experienced, but Qasim and Mubassir Khan, the same kind of. So very much similar till here. And then the bowling starts. Usman Qadir, definitely a heavyweight wicket taker. And there is Mehran Mumtaz, who's obviously a left armer, not as threatening as the leg spinner maybe. And then the three quicks. And here, Hunain and Umaid Asif can be a handful. Interesting, how do you compare the three fast bowlers to the three fast bowlers on each side? Umaid versus Zaman, Hunain versus Kashif, and Nisar versus Owais. I think in Owais Anwar, Nisar takes a bit of an edge. Yes, having said that, Zaman and Salman Irshad would have been equal. But Salman is gone. He's there to play the T10, and the man who takes his place, Zaman Khan, is a bit more different kind of a bowler. Good call from the non-striker Imran. Bowling, righty guys, Young Owais Anwar is been given the job to bowl the new ball from the pavilion end. It's good to see big, tall, fast bowlers come in, and I saw him in the List A competition this year making his debut, and here he is playing the national T20. He has a good height, and if he can get some rhythm going and landing the ball in the right areas, maybe poses a different challenge. Because of his height, extra bounce is another possibility. And on this pitch, we have seen short ball trouble a few players. Caught in a bit of a tangle there with the bowler and his follow through. As all's good. If you see the tournament, a couple of years ago, National T20 was in Pindi, then it was in Multan, now it's in Karachi. And of course, as the conditions change, you'll see that one season bowlers have more say, fast bowlers, somewhere spinners, sometimes batters have. Has Karachi surprised you in a way? We've seen scores in 130s, 119, 20 in the last 3, 4, 5 games, where spinners are having more say. You'd expect batters to do well. Yeah, you make a good point, but then we have to evaluate what was different in those last few years. And then there were only 6 teams playing. So it all came down to the top 6 sides. Here we have gone back to the 2014 constitution, where it is 16 or 18 regions. So now many teams are coming back in this competition who were not there for more than a decade. And that is where the competition part has gone down a bit. But as we move closer to the final stages of the tournament in the Super 8, is definitely better than when the 18 teams started. And when we get to the last 4, it will get to a point where you'll see the same intensity. And this one has been pulled away, and this is why Umar Siddiq is a special player. He will play shots and make cricket look easy and elegant at the same time. Beautifully struck over mid-wicket. Wow, that's some shot, and tells you that he is sighting the ball really well. Just looking at our statistician tells us, so the average score at the ground here in this tournament has been in the Super 8 has been 145. You're talking batting first. Overall is 157, but that's a huge number.
So you expect that to increase by what, 10 runs in the last 4 team count? But I'm just thinking about the 18 team format. It's not much of a difference. 148 is overall, 145 and the Super 8. I think the two Lahore teams have been the major contributors of this run rate not being that high, this total, because these two teams have been getting out cheaply. And we saw even today Lahore only managed 119. There are a couple of occasions they were 30 for 7 and things like that. And their batters have not been responding the way they should be. So it's 2 over gone, 11 for none Lahore Blues. So there is the points table, and we can see Peshawar playing like a champion, 4 out of 4 for them. Rawalpindi 3 out of 3. These are the two heavyweights. Aptabad 3 out of 4. That's another top performance. And then Karachi Whites. So the top 4 have won 4, 3, 3 and 2 games. And there's one team, Lahore Whites, which is yet to, create an impact. Both Lahore teams coming in with reputations, but their performances have not been up to the mark. Chance, direct hit problems, and gone for 4. 4 overthrows. No one backing up. Oh, he stopped it. Well, I was thinking it's just gone through. Maybe I've been seeing too much of wrong happening in the field that I thought it's just gone through. He tried to throw it to the strikers, and I saw the guy backing up, trying to cover the non-strikers. Well, he's done well to cover ground. Have a look at that. This was played down to backward point, and he's thrown it to the strikers. I mean, just for a moment, I thought it's that bounce coming off that reserve pitch almost caused the error. Gone over slip. He goes hard at it, and that will be a favor to the batter. If you want to swing, swing hard. Yes, especially this cut stroke. They say if you cut hard, and that is the reason why. This is the benefit. Even if you edge it, it flies over the slips and the keeper. And we see him run, but slashing hard and getting 4 runs out of it. Although not the desired area, but the same result. So Kashif, unlucky. They are getting the edge, but no result. Oh, what a ball. What a ball. That did everything but take the edge. Superbly done. Not much a batter can do about this. So we've seen that bowlers who bowl seam up, like Kashif, you just see the ball come out of his hand, and there's been movement. We saw Amir move the ball. This one was off the pitch. That's why the batter was surprised. It's movement of the deck is always hard to handle, harder than the movement in the air. Yeah, every time he bowls a little wide outside off stump, Imran is all over it. Finds the gap again. So that consistency from Kashif is missing a little bit. That edge over the slip was also not a very good ball. Too much width. So you know you don't ball in there. Yes, width provided, and then it's at the mercy of the batter. And he will not spare anything that wide and that short. When you bowl a good line and you beat the batter, all ends up. I fail to understand why do you not repeat the same line and length. Yeah, that's really ordinary from Kashif. Suddenly the last 2 balls after that peach of a delivery has cost the team boundaries. 3 boundaries in the over, 3 dots as well. 23 for no loss.
Yes, once again we see width and shot and same repeat of the stroke from the batter. One down the ground, one in the air, one over the slips, all same results. 23 for no loss. We're talking about run rates. Have a look at this, Simran. Numbers do suggest why you are at a certain place in the points table. Lahore Blues and Whites right down there because their runs per over is not matching up with the other sides. Least Lahore Whites 6.7 and just around 7 is Lahore Blues. Rest of them all above 7 or 9 to speak. That's because they've been throwing their wickets away. They have not played the power plays well. Well bowled this time. And it's very encouraging to see young, tall fast bowlers coming in and bowling in the right areas. And when they get it right, they also get the movement. And this is something we haven't seen much. Highest runs per over. And Pindi, Peshawar, the top three teams are right up there with the runs per over. And the average is also very low with Lahore Whites and Lahore Blues, both the teams struggling with their batting. Second time around, he's been able to pick that up off the length. Nothing Mubassir could do, though he didn't have to move too much to his right, but it was well timed. Yes, once again shot. And Rawalpindi bowlers, yes, they are young, but they need to learn quickly. We saw 3 short ball go for boundaries in the previous over, 1 shot from Awais in his previous over, and now this is second time that he has dropped shot and got the same treatment. Yeah, good call not to go for that single. The fielder at mid-wicket got a good bounce. He would have had ample amount of time to aim and hit bullseye. Zishan Malik. So we know this part, that the start from Lahore Blues is good. Imran Butt, Umar Siddique, they're usually good and they get them runs. The problem comes once one of them gets out. If they can provide a good 46, 50 run power play, then you believe that the middle order will feel less pressure and they can walk themselves into an innings. Yes, but the good start doesn't mean that you get the 40-50 and then you get out. And this one has been flicked and will be another boundary. So poor bowling again on the pads, and this is the stronghold of Umar Siddique. You just cannot get away by bowling on his pads. Both the openers giving Lahore Blues a good start, which was required. 31 for no loss so far. And coming back to your point, scoring good 50-60 in the power play does not mean that you have done your job. If you are batting, if you are watching the ball well, then let's take it through. Let's move till the end. Maybe think about getting 100. Apish and will go for another boundary. Awais is just repeating what Kashif did in the previous over. He's just been all over the place, spraying it around. And he already has been hit for 3 in the boundary with 1 ball to go. Yes, in the replay, this time the length and the line was a bit better, but unlucky the bowler, the batter just edging it, and was lucky that the ball went in the gap. So not that bad bowling, but the batter being lucky on this occasion. Yeah, he was worried. Does it carry all the way to Kashif Ali at third? It didn't. Good 4 overs, 36 for no loss.
शाहनवाज भाई भाई थोड़ा सीधा हो जाए, थोड़ा सा। ज़माना लग जाना। परफेक्ट। अच्छा स्टार्ट है ये अब अंदर आ जाओ। लाहौर ब्लूज के लिए। बस। मोहम्मद नवाज आ गए हैं। पावर प्ले में बॉल करना इनके लिए कोई नई बात नहीं। ठीक है, ठीक है। अच्छा रिकॉर्ड, एक्सपीरियंस क्रिकेटर हैं शाहनवाज अपने भाई। होम टाउन रावलपिंडी के लिए। जब भी मौका मिलता है खेलते हैं। शादाब की गैर मौजूदगी में आज उन पे काफी दबाव होगा और अपनी टीम को वापस गेम में लाना होगा। टॉप एज और ये कैच ड्रॉप हो गया। नासिर नवाज जो कि बहुत ही अच्छे फील्डर हैं आमतौर पर, इस मर्तबा इस कैच को थामने में नाकाम रहे। पहला ब्रेक थ्रू हासिल कर सकता था रावलपिंडी और ये इजी कैच था, मुश्किल कैच नहीं था। अमूमन नासिर नवाज एक अच्छे फील्डर साबित होते हैं लेकिन ऑन द मूव रहे, स्क्वीज करना चाह रहे थे बिहाइंड स्क्वायर, टॉप एज हुआ। ऑन द मूव होने की वजह से ना नजर रख पाए और ना ही कैच कर पाए और बिल्कुल खुश नहीं है नवाज इस एफर्ट से। फिर गैप हासिल करने में कामयाब हो गए और एक और बाउंड्री। प्रेशर में रावलपिंडी की टीम और इमरान जो इस टूर्नामेंट में अच्छे फॉर्म में नजर आए हैं, ज्यादा बड़े स्कोर नहीं किए लेकिन आज लगता है मूड में है। ओवर करेक्ट कर गया इस बार नवाज। पिछली गेंद मुंह पे कराई थी जिसपे कैच निकला था, इस बार थोड़ा सा खिंचा हुआ लेंथ था। बहुत ही अच्छी शॉट थी ये, बिल्कुल अपनी आंखों के नीचे खेला, लेट खेला ताकि इस गैप को एक्सप्लॉइट कर सकते। इस बार कोई मौका नहीं था दोनों फील्डर्स के पास। अच्छी प्लेसमेंट, एंगल्स को एडजस्ट किया है बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर को, लेकिन इस मर्तबा इमरान भट्ट ने दूसरी जानिब हिट किया नवाज को। वहां पे भी गैप मौजूद और एक और बाउंड्री। इमरान भट्ट ने आड़े हाथों लिया नवाज को। अच्छी बैटिंग है इमरान भट्ट की क्योंकि नवाज एक ऐसे बॉलर हैं, अगर आप इनको अटैक कर लेते हैं, रन्स के लिए इनको ले जाते हैं तो फिर प्रेशर आ जाता है दूसरे बॉलर्स पे। इस बार लेंथ जल्दी पिक की थी, अच्छा कलाइयों का इस्तेमाल किया, विप किया ताकि हवा में भी गेंद जाए और बिहाइंड स्क्वायर जाए। वहां पे कोई फील्डर मौजूद नहीं था। अच्छी बैटिंग है, दोनों जानिब एक्सप्लॉइट कर रहे हैं गैप्स को इमरान। यहां अब इमरान को इस इनिंग्स को तूल देनी होगी अपनी टीम के लिए। पिछले मैच में भी अच्छा खेलते खेलते इसी तरह आउट हो गए थे। इस मरतबा बैकवर्ड पॉइंट का फील्डर थोड़ा सा फाइन था, गेंद सीधी उनके पास गई। बट ने इस टाइम को भी इस बॉल को भी अच्छा टाइम किया था, प्लेसमेंट नहीं मिल सकी। खुद लेना, खुद लेना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस आगाज के बाद अब उमर अमीन क्या सोच रहे होंगे, कैसे इस पार्टनरशिप को तोड़ा जाए। थोड़ी स्ट्रेटजी उन्हें चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्हिसार कर रहे थे नवाज पे, लेकिन उनको नलिफाई कर दिया उमर और इमरान की बैटिंग ने। लेकिन अभी भी बहुत गेम बाकी है। खुद लेना। कोशिश की कि विथ ना दें और लेंथ भी। अच्छा इख्तिताम किया ओवर का, लेकिन महंगा ओवर था। 9 रन आए, 5 के बाद 45, कोई खिलाड़ी आउट। जबरदस्त शाम कराची में और ऐसे में टपाल टी हो जाए तो क्या ही बात है। इस लाउंज में हमेशा गहमा गहमी रहती है और यहाँ कमेंट्री बॉक्स में भी गहमा गहमी है। मरीना के पास टपाल चाय भी है और गाजर का हलवा भी। ये चम्मच फरहान का है, ये मेरा नहीं। ये रुख आपकी तरफ कर रहा है इसलिए आप इस पे इन्हिसार करें। कोई मुजायका नहीं है वैसे, जैसा मौसम है। हम दोनों की कमजोरी इन्होंने हमारे सामने रख दी और कमेंट्री करने की ड्यूटी दे दी। आधी नजर उधर है, आधी मैच पे। अच्छा हुआ आपने अपना भी कह दिया, नहीं तो मैं ज्यादा बदनाम हूं। जमान की आमद हुई है बॉलिंग क्रीज पर और शायद इसी इंस्पिरेशन की जरूरत थी पिंडी को और उमर अमीन को, इसीलिए वो लेकर आए हैं जमान को जो कि अच्छी फॉर्म में है इस टूर्नामेंट में।
लास्ट मैच में भी अच्छी बॉलिंग की थी, थोड़ा फिटनेस का इशू रहा था इन अ सेंस के फील्डिंग में थोड़ी सी मुश्किलात आई थी, स्लिप हुए थे 2 मरतबा। लेकिन इनका स्पेल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, स्पेशली इस स्टार्ट के बाद। इकोनॉमी थोड़ी सी हायर साइड पे है, लेकिन अगर विकेट्स आपको लेके दे सकते हैं तो इसमें कोई मुजायका नहीं है। इकोनॉमी इसलिए भी हाई है कि बहुत ज्यादा ये पावर प्ले में और डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हैं। शॉर्ट पिच डिलीवरी, इमरान भट्ट ने शॉर्ट पिच बॉलिंग को बहुत अच्छा खेला इस टूर्नामेंट में, और ये तो बॉल निकल गई 6 रन के लिए। 50 रन मुकम्मल हो गए लाहौर ब्लूज के, शानदार आगाज। जमान आजमाएंगे जरूर बैटर को शॉर्ट पिच डिलीवरी से, लेकिन इस बार जो लाइन थी वो आसान थी, इसलिए बआसानी इसको बिहाइंड स्क्वायर खेल दिया। कनेक्शन हासिल करने में कोई मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि डायरेक्शन अगर थोड़ी सी फिनिश हो रही होती ऑफ स्टंप पे तो फिर मुश्किल होनी थी, लेकिन ये वेल डायरेक्टेड शॉर्ट बॉल नहीं थी जमान की जानिब से। स्लो डिलीवरी के साथ वापसी हुई जमान की, लेकिन 1 रन फिर भी बना। ये जो बाउंड्री इमरान ने हासिल की, जमान को हमने काफी बॉलिंग करते देखा है पीएसएल में भी, बड़े बड़े बैटर्स इनकी जो शॉर्ट पिच डिलीवरी होती है वो उसको जज नहीं कर सकते, और हम उमूमन लेट हो जाते हैं। शायद उसकी वजह ये है कि बिल्कुल वो अंपायर के पीछे से उनका हाथ आता है और स्लिंगी एक्शन है, ये देखिए। लेकिन इमरान ने तो बहुत ही खूबसूरती से इसे जज किया और फिर टाइम भी किया। लाजवाब स्ट्रोक था। बाहरी किनारा, किस्मत भी लाहौर ब्लूज के साथ है, ऐसा लगता है। खुशकिस्मती के 4 रन उमर सद्दीक को। अच्छा गेंद था, थोड़ा सा फील करना पड़ेगा आपको जमान के लिए। लेंथ अच्छी थी, ऑब्वियसली ज्यादा कदमों का इस्तेमाल किया नहीं उमर सदीक ने, लेकिन इस वक्त जो लक है वो जैसे आपने कहा लाहौर की तरफ है। एक जेन्युइन एज निकला, साइड ऑन कर दिया था जमान खान ने। और आप बात कर रहे थे कि बड़ा अच्छा कनेक्शन हासिल किया शॉर्ट पिच डिलीवरी पे, पिच भी थोड़ी सी स्लोअर साइड पे है। मतलब डिसीव किए, लेकिन ये बॉल भी ऊपर से निकल गई और ये भी 4 रन हो जाएंगे। किस्मत की बात की, उमर सद्दीक कुछ मैचों से बाहर बैठे हुए थे, लेकिन जब वापसी हुई है यहाँ बड़ी स्टेज पर तो किस्मत के धनी साबित हो रहे हैं मुसलसल। खुशाइन चीज है लाहौर ब्लूज के लिए, क्योंकि उनकी किट रेड है, लेकिन चमक रहे हैं उमर सदीक। और ये डबल माइंडेड हो गए थे, फुलर लेंथ थी, शायद ड्राइव के लिए जा रहे थे, फिर अंदाजा हुआ कि लेंथ आगे का है, यॉर्कर से बैट हटा नहीं पाए। लेकिन जो भी हुआ उनकी किस्मत आज उनका साथ दे रही है। रन्स जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे, दूसरा महंगा ओवर साबित हो रहा है ये। डॉट बॉल के साथ ओवर का इख्तिताम, पावर प्ले भी जाता रहा। 61 रन बगैर किसी नुकसान के लाहौर ब्लूज। I think you have to give credit to the bat. बहरहाल हैदर ने इशारा किया, पावर प्ले का इख्तिताम। थोड़ा सा अंदर। इमरान भट्ट बिल्कुल भी बख्शने के मूड में नहीं है, और पिंडी के फील्डर्स गेंद चेस करते हुए, लेकिन कोई किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है। एक और बाउंड्री। थोड़े ऑफ कलर लग रहे हैं नवाज। इमरान भट्ट इतने लंबे कद के मालिक नहीं, इसलिए बहुत जल्दी लेंथ पिक करते हो। अगर आप देखें फॉरवर्ड प्रेस करके बहुत जल्दी पिक करते हैं। हल्की सी भी खिंची हुई, हालांकि इतनी पीछे गेंद नहीं थी, लेकिन कामयाबी उन्होंने हासिल की बाउंड्री लेने में। थोड़ा पीछे गेंद कर रहे हैं नवाज। बहुत ज्यादा प्रेशर में आ गई है पिंडी की टीम।
एक्सपीरियंस नवाज भी रन्स का फ्लो रोकने में नाकाम नहीं, बहुत शदीद जरूरत है यहाँ पे विकेट की। हालांकि हमने देखा है कि लाहौर ब्लूज की जब विकेटें गिरती हैं तो फिर वो उस कोलैप्स को रोक नहीं पाते, लेकिन स्टार्ट अच्छा है अभी और उमर के वापस आने से फर्क पड़ा है, क्योंकि उमर एक बहुत ही सॉलिड बैटर हैं, सॉलिड टेम्परामेंट भी है इनका। यही जरूरत होती है अच्छी पार्टनरशिप के लिए। उन्होंने रियलाइज किया कि इमरान का फ्लो अगर अच्छा है तो उन्हें स्ट्राइक देंगे, और जब खुद भी मौका मिलेगा, खुद भी अच्छी बाउंड्री ले रहे हैं, तो एक अच्छी पार्टनरशिप डेवलप कर गई है। उस पार्टनरशिप की वजह से ही प्रेशर पिंडी पे है। नवाज को बहुत ज़्यादा पेस वेरिएशन करते देखा नहीं हमने, क्योंकि स्पिनर्स जितने भी इस तरह की पिचेस पे हमें नजर आए पिछले 2 दिनों में, स्लोअर पिच है, इसलिए वेरिएशन ऑफ पेस नजर आई। लेकिन काफ़ी तेज गेंद कर रहे हैं नवाज, फ्लैट ट्रैजेक्टरी के साथ कर रहे हैं, ज़्यादा फ़ायदा उठा नहीं पा रहे ऑफ सरफेस, क्योंकि स्लो है, थोड़ा लो भी रह रहा है। अगर रेव्स डालें तो हमें ये भी नज़र आया कि स्पिन भी मिल रहा है, थोड़ा परचेज मिल रहा है, लेकिन वन डायरेक्शनल बॉलिंग कर रहे हैं नवाज। और प्रॉब्लम उमर अमीन के लिए ये भी है कि रावलपिंडी के पास तीनों फिंगर स्पिनर्स हैं, नवाज हैं, मेहरान और मुबस्सिर। राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन की वजह से अभी तक मुबस्सिर को भी इंट्रोड्यूस नहीं करा पाए। ऑप्शन जरूर हैं, लेकिन अच्छा बॉलिंग कॉम्बिनेशन इस वक्त मिल नहीं पा रहा। रन्स दोनों एंड से आ रहे हैं। इस मरतबा जोरदार अपील है, लेकिन क्या ये बॉल लेग स्टंप से बाहर पिच हुई, नॉट आउट का इशारा। अच्छा इख्तिताम किया नवाज ने 2 डॉट्स के साथ, 68 पे कोई खिलाड़ी आउट। आउटसाइड ऑफ स्टंप पिच हुई थी ये। फिंगर स्पिनर मौजूद ज़रूर हैं, लेकिन जो लेंथ अपनाई हुई है मुझे उससे एतराज़ है, क्योंकि यहाँ पे स्पिनर्स को हमने देखा है कि काफ़ी इम्पैक्ट पिछले 3, 4, 5, 6 गेम्स में बल्कि नज़र आए हैं कि ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है, विकेट्स हासिल कर रहे हैं, लेकिन शायद उस चीज़ को इन्होंने पिक नहीं किया। एक कन्वेंशनल और नेचुरल आपकी जो लेंथ और स्पीड होती है वो तो है, बट ऑब्वियसली एक अच्छे बॉलर का यही कमाल होता है कि वो सिचुएशन और पिच की कंडीशंस को रीड करके उसके अकॉर्डिंगली बॉल करे। दोनों की स्ट्राइक डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी जबरदस्त है दोनों ओपनर्स की। 21-21 गेंदें उन्होंने खेली हैं, रन्स भी तकरीबन बराबर। मेहरान मुमताज आ गए हैं, और अगर देखा जाए ज्यादातर कामयाबी यहाँ स्टेडियम में, नेशनल बैंक स्टेडियम में रिस्ट स्पिनर्स को मिली है। अच्छा स्टार्ट मेहरान का, अच्छी फ्लाइटेड डिलीवरी। ये तवील कामत हैं जरा ज्यादा, और हाई एक्शन में लूप के साथ भी गेंद कर सकते हैं। नए हैं, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। 15 मैचेस 15 विकेट्स, इकोनॉमी 7.7। मोहम्मद इरफान को भी देखा, उन्होंने काफ़ी अच्छा स्पेल किया था, कंटेन किया था। सिर्फ विकेट्स की बात नहीं होती, ये चीज़ भी है कि एज अ बॉलर आप अगर नहीं विकेट हासिल कर पा रहे, एटलीस्ट आप रन्स रोकने जा रहे हैं, आप एक लाइन और प्लान के साथ बॉलिंग करते हैं, और दूसरे एंड से हो सकता है कि आपके साथी बॉलर को विकेट्स मिलना शुरू हो जाए। दरमियान से आपने अच्छा कंपैरिजन किया या नाम लिया इरफान का, जो अपने करियर के उस स्टेज पर हैं, तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। आप उठा दिया ऐसे उमर ने, एक टिप्पा और बाउंड्री लाइन के बाहर। जो ही बॉल उनकी आर्क में आई, उन्होंने कोई झिझक का मुजाहरा नहीं किया और मेहरान को भेज दिया मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। 4 रन। स्ट्रगल तो जारी रहेगी रावलपिंडी बॉलर्स के लिए, क्योंकि राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन आसान नहीं है, स्पेशली शॉर्टर फॉर्मेट में। इस बार भी बहुत तेज गेंद किया था, और शायद पेस वेरिएशन करनी पड़ेगी स्पिनर्स को यहाँ। चलो अच्छा कमबैक, स्लो डिलीवरी थी। तो जो आपने बात की इरफान की, दोनों का कंपैरिजन, इरफान अपने करियर में काफी एक्सपीरियंस्ड है, मेहरान बहुत बासलाहियत हैं लेकिन नए हैं। तो आपको फर्क नजर आता है कि जो अपनी क्राफ्ट में एक महारत आ जाती है ओवर द इयर्स। आप इरफान और नवाज का कैसे कंपैरिजन करेंगे? चांस है यहाँ पे, और अंपायर तीसरे अंपायर से रुजू करेंगे। क्या रावलपिंडी को यही ब्रेक थ्रू चाहिए था
क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रेशर में, रन्स रोकने में नहीं आ रहे, और दो बहुत ही अच्छे बैटर्स, जबरदस्त स्ट्रोक प्ले। लेकिन यहाँ हमने कई मरतबा देखा है कि T20 मैचेस का नतीजा एक अच्छी फील्डिंग की जो कोशिश है मैच का रुख पलट सकता है। दूर दूर से आउट हो गए यहाँ पे जमान खान ने। जो काम बॉलिंग से नहीं कर सके वो फील्डिंग से कर दिखाया, और उसकी अहमियत उतनी ही है जितनी वो बॉल से अगर करते तो यहाँ पे गेम अवेयरनेस पे सवालिया निशान है, क्योंकि सुबह भी हमने देखा जो अहमद शहजाद रन आउट हुए थे अपनी गलती से आउट हुए थे। यहाँ पे जमान खान जो कि एक फास्ट बॉलर है, आप कभी भी किसी फास्ट बॉलर को थ्रो पे चैलेंज नहीं करते, और काफी दूर थे, ये जानते हैं कि आउट हो गए में, लेकिन ये अच्छी कोशिश, और ये पासा पलट सकता है जैसे आपने कहा कि एक अच्छी फील्डिंग एफर्ट, एक अच्छा रन आउट या अच्छा कैच, ये मोमेंटम को वापस रावलपिंडी के पास लेके जा सकता है। ये आसान डिसीजन होगा, मेरा नहीं ख्याल के ज्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि ग्लव्स बाद में लगे हैं, स्टंप्स पे पहले गेंद लगा। ये कंफर्मेशन आ गई, पहला झटका लाहौर ब्लूज के लिए इमरान भट्ट की सूरत में, जो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, सॉरी उमर सिद्दीक है, बल्कि एक बड़ा झटका उन्हें लगा, वो वापस डग आउट। रीना, आपने जिक्र किया गेम अवेयरनेस का। रनिंग बिटवीन द विकेट एक बहुत बड़ा आर्ट है और बहुत बड़ा स्किल है, जनरली निगलेक्टेड रहता है, इस पर इतनी तवज्जो दी नहीं जाती। यहाँ से आपको आइडिया होगा, उमर की कॉल थी, कोई झिझक भी नहीं थी। इसका मतलब यह है कि कॉलिंग में जो जजमेंट में गलती हुई यहाँ से, और जजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रनिंग बिटवीन द विकेट का। सिर्फ तेज भागना ही जरूरी नहीं होता, और यहाँ पे उमर ने खुद गलती की और खुद ही उसका खमियाजा भुगता। कैसे बैटर आपको ये भी देखना होता है कि किस पोजीशन पे कौन सा फील्डर मौजूद है। रिजवान हुसैन अब आए हैं, भी लेफ्ट हैंडर है। ये आपकी ऑब्वियसली गेम अवेयरनेस की चीज़ों में आता है कि एज अ बैटर आप किस फील्डर से चुरा सकते हैं, लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड फील्डर कौन है, ये सारी आपकी रनिंग जजमेंट में आता है। 8 ओवरों के बाद 74 for 1। ठीक है यहाँ और अंदर बस बस काशी भाई 2 कदम आगे। चल 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 लाओ लाओ लेफ्टी बॉयज इधर से करेगा मिडल। Very crucial stage that they've lost their opening partnership. You'd like to believe that they've done their job 70 odd in quick time, but to lose a wicket or run out, you just feel that could have been better. Cannot lose their way from here, Lahore Blues. They've got a good start for themselves. Imran bats for another 5 overs, surely looking to get more and more runs, and in quick time. And a very happy Ali next to us, and likes to see the Lahores, both the Lahore teams perform. But the problem is that the minute they're performing, it becomes arrogant. Yeah, I'm just amazed that how one man can change the look of the team. Look at his face, the arrogance on his face. Yeah, go on, go on. Yeah, just I'm saying just one man, Umar Siddiq, they added in this side, and he has made a difference.
I believe that was the missing link in Lahore Blue side because they've complete bowling lineup, but their batting was struggling. It's a good decision to bring in Umar Siddiq. He scored 37, not an ideal way to get out. Ran himself out. 23 deliveries for his 37. And with proper cricketing shots, no slogging, no power hitting, proper cricketing shots. And that's what I like to see from Lahore. Approach, intent, positivity, they're doing it. And it's much needed because both the teams of Lahore are struggling. 9 overs gone, 80 for 1. I'm sure they're very happy that you're impressed. They actually wake up, get dressed and come here to impress you. Rawalpindi already have brought 6 into operation. And nothing in the wickets column for the bowlers except for that one run out. Rizwan Hussain on strike. And gone. Middle stump. I was just saying, has Ali spoken too soon? It's not just about one man, Umar Siddiq, who's given a good shot and good start. It's about the others cashing out on it. I don't really know if that was a necessary shot because he was nowhere close in covering the line of the ball. And it's good night to Rizwan. I believe I have spoken too soon. Shot selection again. Why do you play? Why would you want to play a shot like this when you've got runs on the board at a quick rate? Why would you take that chance against a quality bowler like Mehran Mumtaz, who bowls wicket to wickets? That's bad game awareness from Rizwan Hussain. He will have to go back on 3. It's 80 for 2 now. Right, the combination of a left-hander and right-hander continues. Come on, boys. Hussain Talat, the skip no. 3,157 runs. What did you say? Every left-handed batter who's a captain is not skip no. Get it right. I know you've lost 2 wickets. Just get it right. The word is skipper. Yeah, I usually call Salman Butt that, but every skipper of the team, 81 for 2. They need a partnership once again. That's not good. Look, Imran Butt wanted a single. And that's how Rizwan lost his wicket. Poor shot selection again. The ball spun within the stumps. There was a lot of gap between his bat and pad. He wanted to slog sweep it. That's not the way. You had the start. You just had to carry on playing. Oh, yes. Oh, yes. In a span of 1 over, he's just gone and struck twice, and he has dismissed the big fish. Imran Butt hitting top of off. Once again, trouble looming on Lahore Blues. Bad shot again. As I said, he bowls wicket to wicket. It's not advisable to cut him. That's exactly what he does. Look, it's wicket to wicket. He wanted to just cut it or guide it towards third. Mehran Mumtaz, we know that he's got quality in him. He bowls quick, he bowls wicket to wicket, he gets the spin out. He'll have to go back. 39, 81 for 3. Qasim Akram.
One more time, team needs him. One more time, he needs to deliver. 81, they've lost 3 quick wickets, 124 the strike rate, 450s. Best of 64. Needs to deliver. What an over this, over number 10. 2 wickets and just 1 run. 1 more ball to go. He's completely changed the game in Rawalpindi's favour at this stage. He's brought them back after getting hit for the first 7 overs. That'll be a boundary. He's a very talented batter. Qasim Akram. It's just consistency is missing and he'll get that with time. 10 overs gone, 85 for 3. Absolutely, you said it right. He's got the talent. He needs to transform that talent into performance. Until then, the talent is of no use. This is a good start for him towards the leg side. That's what we know. Mehran Mumtaz ball it quick. He just had to put the bat on the ball. Another talented bowler, Mubassir, is similar to Qasim Akram. Off-spinning all-rounder. Qasim Akram also off-spinning all-rounder. Oh, again confusion. Imran Butt lost his wicket. He wanted to play towards third, the ball which was within the stumps. I'd just like to go to the previous delivery, what happened in the previous delivery. He wanted to take a single, was Santala denied, and he was annoyed. I'd just like to see that. Have a look at this. Imran Butt played it with soft hands, wanted a single. Sam Dalit was not interested. And look at Imran Butt. He wanted a one. Oh, that's 4. Beautifully cut through the gap. But Sam Dalit will have to make it up to it. Good boundary. So let's get back to the same, because this wicket can make a difference in the result of the game. It was a big wicket of Imran Butt. Had he taken that single, he would have gone to the other end and a left-hander would be facing. Look at that, there was a single available. He was annoyed. Look, he was so sure that there is single. And look, still he wanted a single. Still asking for from the partner, why didn't you come? And then the very next ball, he was bowled. This might cost them. Oh, bowling yaar. Mashallah, mashallah. Again, you need to build another partnership. Both new batters, Qasim and Santala, they've got the talent. As you said, Qasim Akram, he needs to deliver. It's about time now. Grip and bounce. That's a good ball. 11 gone, 91 for 3. Yeah, grip, bounce and spin. Finger spinner. Oh, there was a puff of dust coming up. That's a good news for Lahore though. They will be bowling last. 91 for 3 after 11. Bowling, 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 bowling. They should be eyeing on anything between 165 and 181. The projected score from here on. Very nice, very nice. In the previous outing here at the ground, we saw the Lahore Blues trying to hit big and they were handing catches to the fielders who didn't have to move much to the right or left. Even a good partnership came along between the two who are batting right now, Hussain Talat and Qasim Akram, and then they lost their wickets in succession, playing shots, one at long on, one at deep square. I hope that they've learned from there, because today they'd have an excellent platform. Even the match before this, Lahore White scored 118 for 6.
They had 4 wickets in hand. They played 20 overs. चलो 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 Oh, again, non-striker. Now this is really trying to put yourself in trouble. कोई बात नहीं कोई बात नहीं Once again, Hussain Talat comes down. He's missed the ball in the previous game. He got stumped. Today, he's lucky he got that inside edge. Have a look. Confusion. What are they doing? Look at that. Oh, a better throw was required. That's Mubassir is usually a very good fielder. Sorry, it's Zaman Khan. He's equally good. No worries. वन मेरी ठीक है But I think the pressure has got to these batters. After a good start from Umar Sadiq and Imran, but they're just losing their way. Rizwan Hussain has been the problem. He's not scoring runs. He's full of talent, but he's just not been able to score runs. वन very nice यार very nice So we saw the result in the previous game. From there on, I think 170, if they can get, which they should get from this start, that will be a good total in the first inning. ओए Both of them are hitting the ball hard. They're going hard at it. Just sense a certain level of urgency in their batting. मेरी एक अच्छा skipper नहीं ना मैं I told you, certain level of urgency. This time was a little too full from Mehran and it allowed Hussain to get underneath it. Maximum to end the over, and Lahore Blues gets 100 on the board. 102 for 3. Yeah, that was in his slot. Good intent shown by Hussain Talat that if you ball in my zone, in my area, I'm going to go after you. And that's exactly what he did. The clarity of thought and the execution also. Great swing off the bat. That's probably a rare bat delivery that Mehran Mumtaz has bowled in this inning. It's 102 for 3. skipper 100 मुकम्मल हुए हैं लाहौर ब्लूज के और अब प्लेटफॉर्म सेट है आखिरी 8 ओवर्स के लिए। लाहौर ब्लूज को फतह की शिद्दत से ज़रूरत। चल खुद ले रावलपिंडी के खिलाफ जो उनको स्टार्ट मिला था उसके बाद इन 3 विकेट्स के साथ जो कि ऊपर तले 74, 80 और 81 पर इन्होंने कंसीड किए हैं, उसके बाद दोबारा उठना पड़ेगा। और अब तक बड़े अच्छे शॉट के सिलेक्शन का मुजाहरा किया है। एक तरफ कासिम अकरम है जिनको अपने इस टैलेंट को प्रूव करना है, दूसरी तरफ है कप्तान हुसैन तलत जिन्होंने बड़ा शॉट लॉन्च किया। वन बेहतर बॉलिंग इस पर तबाह मुबस्सिर भी कर रहे हैं, मेहरान मुमताज़ भी। जो हम बात पहले मैं शाह फैसल के साथ कर रही थी कि ये विकेट डिफरेंट है, यहाँ पे आपको पेस वेरी करके थोड़ा सा स्लोअर बॉल और बीच में मिक्सअप्स करने पड़ेंगे। नवाज ने बहुत तेज़ गेंदें की जिसकी वजह से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। वन एक मरतबा फिर अच्छी सोच का मुजाहरा किया कप्तान हुसैन तलत ने। लाहौर की टीम ने कोई बड़े टोटल हासिल नहीं किए हैं, ये भी उन टीम्स में से एक है जो कि 150 के करीब पहुंचती रही है। और कल इन्होंने फेमसली पेशावर के खिलाफ जो 134 रन का टारगेट था, महज 5 रन के फर्क से पीछे रह गए थे। खुद ले वो तमाम कोलैप्सेस जो कि इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान इनको कंसीड करने पड़े हैं, इनके जहन में किसी गोशे में होंगे, जिसके बाद एक मोहतात रवैया अब तक अख्तियार किया। कासिम अकरम का टूर्नामेंट काबिल जिक्र नहीं गुजरा है, टैलेंट से भरपूर है लेकिन प्रूव करना है। देखा क्लैरिटी ऑफ थॉट कई मरतबा शायद आपको इन बैटर्स के जहन में मरीना लगता है कि नहीं है जब वो बड़े शॉट के लिए जा रहे हैं, और वो हाफ हार्टेड शॉट्स जो कि इनकी विकेट का बायस बन जाते हैं, वो एक मरतबा फिर आड़े आते हैं। बड़ी बाउंड्री हैं दोनों जाने। तीनों डिलीवरीज जो खेली हैं कासिम अकरम ने, वो बहुत ही जोर से शॉट मारने गए हैं, इसी वजह से कोई अच्छा टाइमिंग हासिल नहीं कर पाए। 104 पे 3।
T20 फॉर्मेट में ऑब्वियसली बैटर्स के पास टाइम कम होता है और अगर अच्छा स्टार्ट मिल गया हो तो आपके पास एडेड प्रेशर होता है उस मोमेंटम को कैरी करने के लिए। लेकिन मोमेंटम यहाँ भी बना हुआ है, अच्छी क्वालिटी क्रिकेट हो रही है और साथ टपाल टी लाउंज में चाय भी चल रही है, मौसम भी शानदार है और अंडर लाइट्स ये क्रिकेट एंजॉय करने का भरपूर तरीका है। शायकीन भी यहाँ मौजूद हैं, अपने स्टार्स को देखने आए हैं और अक्सर सेल्फीज के लिए भी ये खड़े होते हैं, हमें सब नजर आते हैं। जमान जो कि जोश के साथ गेंद करते हैं, यॉर्कर इनकी लाजवाब रहती है। पहले ओवर में उन्होंने 15 रन दिए थे अपनी शॉर्ट पिच डिलीवरीज के तवसत से। अब सामने दो बैट्समैन हैं जो कि कदम जमाने की कोशिश कर रहे हैं, 20 पे 23 बना पाए अब तक और बड़े शॉट की तलाश में सरगर्द हैं हुसैन तलत जो कि इनको मजीद विकेट दिला सकता है। और ये वो ट्रिकी मोमेंट है जो कि टेक ऑफ भी दे सकते हैं लाहौर को, और दूसरी तरफ वो अगर ज़्यादा रैश के लिए चले गए तो आने वाले बैटर्स शायद इस बात के अहल ना हो जो कि कल उन्होंने किया था, उसी के रिपीट करने के लिए वो चले जाएं। इंटरेस्टिंग ओवर होना चाहिए जमान का। क्या यॉर्कर के साथ कंटिन्यू करेंगे? मिसफील्ड महंगी साबित होगी, जो कि एक सिंगल होना चाहिए था, वो बाउंड्री की तरफ गेंद चला गया। काशिफ अली ने यहाँ पे ओवर रन कर दिया, टांगों के बीच में से ये गेंद निकला। अच्छा आगाज जमान के लिए नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि एक अच्छा चेंज है। उमर अमीन ने अपने स्ट्राइक बॉलर की तरफ रुजू किया जबकि कासिम और हुसैन मौजूद हैं। लेकिन अच्छी डिलीवरी थी, उसको सॉफ्ट हैंड से खेला, गाइड किया था, नजर हट गई और महंगी गेंद ये साबित हुई। 4 रन से आगाज हुआ है। काशिफ जो कि पहली गेंद पर आप 4 रन दे देते हैं, लेकिन उसके बाद अच्छी डिलीवरीज भी शायद वक्त के साथ साथ वापस लाने में कामयाब नहीं हो पाती हैं गेम में। दूसरी जानिब हुसैन तलत हैं जो कि लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल कर रहे हैं, कट ऑफ पुल खेलने के शौकीन हैं, स्लो वन को भी जल्द पिक कर लेते हैं जो कि उनकी ऑलराउंड होने की एबिलिटीज का सबूत देती है। अभी आपने देखा यासिर खान को जिन्होंने बड़ी लाजवाब अब तक बैटिंग की है रावलपिंडी की जानिब से, और जो उनकी ये परफॉर्मेंस रही है टेबल के टॉप पे जाने के लिए, पेशावर के हमकदम है उसमें इनके हर शोबे ने परफॉर्म करके दिया है, जो कि कई मरतबा आपको टीम्स बैटिंग हैवी लगती हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी बॉलिंग अच्छी हुई है। काशिफ एक तरफ से जमान, लेकिन इसके साथ साथ बैटिंग ने भी लिव अप किया। बल्ले के मुसलसल ये एजेस से खेल रहे हैं कासिम अकरम, जो कि एक आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन होने का सबूत है। अगर वो फुल ब्लेडेड शॉट्स के लिए गए तब भी, अगर ब्लॉक किया है तो तब भी उनको जो बेहतरीन मीटी पार्ट से मुलाकात होनी चाहिए उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं कासिम। उसमें सबसे अच्छी चीज़ यही होती है कि आप थोड़ा गेंद को अपने करीब आने दें। अगर आप आउट ऑफ फॉर्म है तो हम अक्सर ये बात करते हैं कि बेसिक्स पे वापस जाना चाहिए। ऑब्वियसली टूर्नामेंट ऑन गोइंग है, आपके पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन थोड़ी क्लैरिटी आ जाती है अगर आप थोड़ा सा डिलेड खेलें, गेंद को आने दें अपने पास। चेस करने जा रहे हैं, शॉर्ट पिच डिलीवरी हवा में खेला लेकिन वैकेंट एरिया में चली गई। सरप्राइज अच्छा किया था गो के जमान, जो कि इनिंग्स के आखिरी लम्हात में चेंज ऑफ पेस और यॉर्कर की वजह से बड़ी ज़बरदस्त गेंद करने के लिए जाते हैं, लेकिन हुसैन तलत के साथ इनका शाहकार मुकाबला है जहां पर उन्होंने रीड किया लेकिन शायद जल्द खेल गए, हवा में गई और बच निकलने में कामयाब हुए हैं। बड़ी पेन स्टेकिंग किस्म की पार्टनरशिप है मरीना, जो कि खुल के अब तक वो जो आपको T20 फॉर्मेट में शॉट्स आने चाहिए वो मिल नहीं पा रहे हैं। अच्छा मिक्सअप देखने में नजर आ रहा है जमान की जानिब से। क्वालिटी बॉलर हैं ये, हर चीज़ इनके पास है, वेरिएशन की जहां तक बात है, पेस भी है, स्लोअर बाउंसर्स भी करते हैं, वो भी आसान नहीं होते। ऑब्वियसली स्लिंगी एक्शन है, उसमें पिक करना मुश्किल होता है बैटर के लिए। यॉर्कर्स बहुत एक्यूरेट करते हैं और जो हार्ड लेंथ को हिट करते हैं अच्छी पेस से, वो भी आसान नहीं होता डील करना। मिडिल ओवर्स में आके काफ़ी मुश्किलात खड़ी कर देते हैं बैटर्स के लिए। जोरदार अंदाज से स्मैश किया है, लंबा चेज है फील्डर के लिए और अच्छी कोशिश के साथ यासिर रोकने में कामयाब रहे हैं, और उन्होंने इससे पहले ओवर की इब्तिदा में जो मिसफील्ड हुई थी उसको भी कॉम्पेंसेट करा के दिया। चौके के बाद कमबैक भी अच्छा हुआ जमान का। 6 ओवर बाकी, 114 पे 3। रन रेट थोड़ा नीचे जरूर आया है, लेकिन अभी भी बैटिंग काफी मौजूद है। हुसैन तलत को एज अ कैप्टन खुद भी जिम्मेदारी लेनी होगी। कासिम अकरम के पास बार बार मौके आ रहे हैं कि अपने टैलेंट को सामने लाएं, अपने आप को साबित करें। ये एक और आज के दिन इनको मौका मिला है। 6 ओवर्स का गेम बाकी है और 114
एक तरफ से लग रहा था जिस तरह का आगाज किया था कि एक बड़े टोटल की तरफ चले जाएंगे लाहौर ब्लूज, लेकिन अच्छी बॉलिंग रावलपिंडी की जानिब से, स्पेशली मेहरान मुमताज को दाद देनी पड़ेगी। और जिस तरह से रोटेट फिर मुबस्सिर और नवाज और जमान के साथ किया उमर अमीन ने, वो भी काबिल जिक्र है। मरीना अर्ली डेज हैं, दोबारा से पुराने फॉर्मेट की जाने वापस गए, रीजन्स में दोबारा से खिलाड़ियों के आने का सिलसिला शुरू होगा और उसके साथ साथ इनको कोचेस की भी ये सहूलत दस्तियाब है, जहां पर अब तक इनको 3 नुकसान हुए हैं एक अच्छी पार्टनरशिप के बाद 74 रन की। लाहौर ब्लूज के कोच कामरान है, जबकि दूसरी जानिब रावलपिंडी को जो अब तक कामयाबी हासिल हुई, शायद उसकी एक वजह उनके एक एस्टैब्लिश कोच का होना भी है, जो कि रीसेंट टाइम्स में क्रिकेट भी खेल चुके हैं। समीउल्लाह नियाजी T20 फॉर्मेट में भी उन्होंने खेला और उसके साथ साथ जो इससे पहले के कोचिंग का सेटअप था उसमें भी वो सेंट्रल पंजाब के साथ ज़्यादातर वक्त में मौजूद थे और उन्होंने बड़े ज़बरदस्त अंदाज से अब तक इन तमाम चीज़ों को अपनी जगह पे ढाल दिया है। जो क्लियरली जो कि टेबल के टॉप पे है उसकी वजूहात में से एक नज़र आ रही है कि हर खिलाड़ी को अपना किरदार मालूम है और गो के शादाब आज दस्तियाब नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जोरदार अपील कर रहे हैं, लेकिन पॉसिबली गैलेक्स सिस्टम के बाहर पिच हुई थी या मूव करती तो उनके मौजूदगी ना होने और बावजूद इसके कि बड़ा टोटल कंसीड किया था, अपने प्लान से स्टिक करते हुए नजर आ रहे हैं और स्पिनर्स ने वो जो जाल बुन के दिया है उस पर लग रहा है कि अब वो किसी बड़े टोटल की जानिब नहीं जाएंगे। थोड़ा तेज गेंद किया था, लेग साइड के बाहर ये पिच हुआ, इसलिए नतीजा जो है वो मुबस्सिर के हक में नहीं गया। अच्छी वेरिएशन से कर रहे हैं बॉल। एक और अच्छी कशाकश है दो नौजवान खिलाड़ियों के बीच जो कि पिछले इन्हीं 2 सीजन्स के दौरान मंजर आम पर आए हैं, लेकिन दोनों उस फॉर्म का कामयाबी से मुकाबला नहीं कर सके जो कि इब्तिदा में उनको मिली थी। क्योंकि मुबस्सिर की असल रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद दोबारा से उनकी बैटिंग की जाने भी जाएगी, लेकिन कितना यूजफुल होता है ऑलराउंडर, ये आपको जब बैटिंग का कोई टीम तश्कील देने जाती है अपनी सेटअप को, अपने प्लेइंग 11 को, उस पर शायद अंदाज़ा होता है कि अगर आप किसी ऑलराउंडर को हासिल करते हैं तो आपके बाकी के बैटिंग और बॉलिंग के शोबे में आपको आसानी के साथ बैलेंस मिलने का चांस रहता है। और इस वजह से न सिर्फ इस टूर्नामेंट में बल्कि किसी भी और जगह पे, खासतौर पर अगर फ्रेंचाइज क्रिकेट या PSL होते हैं तो वो ऑलराउंडर्स मांग होते हैं सबसे ज़्यादा। और अच्छा मौका है मुबस्सिर के लिए अपने इस बॉलिंग पोटेंशियल को प्रूव करने का। उन्होंने बड़ी शानदार इनिंग्स जब 2 साल पहले यहाँ पर फर्स्ट क्लास सीजन खेला था, खेल रखी है 4 डे फॉर्मेट में, ग्राउंड से अच्छी अंदाज से वाकिफ हैं, लेकिन अभी भी जिस तरह से आप कह रही हैं कि वो बड़ी तेज़ी के साथ, वो चूंकि चौके नहीं लग रहे हैं, इस बात को माइंड नहीं कर रहे हैं कि अपने ओवर से तेज़ी के साथ निकलें, तेज़ पेस के साथ। बाउंड्री ऑप्शन मिस कर दी हुसैन तलत ने, इसलिए मायूसी का इजहार जरूर किया है, लेकिन एक बार फिर अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आए हैं। बहुत जल्दी शॉट खेल दी थी, गेंद काफी बाद में आया। चलो चलो चलो, तेज रन के जरिए से प्रेशर को अपने ऊपर से उतारने की कोशिश है। फाइनली क्रिकेट तो अच्छी है लेकिन बाउंड्रीज की जरूरत और इंतजार। 118 पे 3। जमान का ओवर थोड़ा सा महंगा गया था और इसको अच्छा कवर किया मुबस्सिर ने। ये बॉलिंग पार्टनरशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली शॉर्टर फॉर्मेट्स में भी। मोमेंटम वापस जाने नहीं दे रहे लाहौर ब्लूज के पास। रावलपिंडी एक अच्छा कमबैक किया इन्होंने। अभी तक की सूरत हाल रही है लाहौर ब्लूज की। 29 डॉट बॉल्स खेले हैं, 2 बार 2 रन बनाए, 16 चौके 2 छक्के। पोटेंशियल मौजूद है, मोमेंटम भी इनको मिल गया था, लेकिन अच्छा कमबैक किया रावलपिंडी ने। अब किस हद तक रोक पाएंगे ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी बॉलिंग ऑप्शंस काफ़ी मौजूद हैं। जमान एक बार फिर बॉल उनको दिया गया है। पिछला ओवर थोड़ा सा महंगा गया था, इस बार कोशिश होगी कि इस ओवर में ब्रेक थ्रू हासिल करके थोड़ा मजीद प्रेशर डाला जाए। 7 ओवर में 68 रन बना लिए थे मरीना लाहौर ब्लूज ने और उसके बाद फिर विंटर ब्लूज इनके आड़े आ गए, लेकिन अब जमान आएंगे इन करने के लिए। और 30 ओवर की इब्तिदा अच्छी की है, स्टंप्स की लाइन में गेंद करके वहां पर लपके थे अटैक करने के लिए नासिर नवाज, जो कि इससे पहले एक बड़ा आसान सा कैच था, उनसे ड्रॉप हुआ, लेकिन उसके बाद से उस पर बड़ी इमारत नहीं खड़ी करने दी।
ये अच्छी हिकमत अमली है, थोड़ा सा चेंज किया है दोनों ने, कासिम और हुसैन तलत ने, क्योंकि बाउंड्रीज इतनी आसानी से आ नहीं रही और जमान को टारगेट करना भी आसान नहीं है। लेकिन हमने देखा है कि स्पिनर्स जैसे मुबस्सिर हो, महरान हो या जमान, इनकी बॉलिंग के अगेंस्ट स्ट्राइक रोटेशन को अहमियत दे रहे हैं, फोर्स नहीं करने जा रहे शॉट्स को जो पहले गलती करते थे। इन स्विंगिंग डिलीवरी, लेकिन लो फुल टॉस हासिल हुई थी और उसको भी स्ट्रेट बैट के साथ सिर्फ यासिर की जानिब खेलने में कामयाब हो पाए हैं। एजिलिटी अच्छी नजर आ रही है इन विकेट्स को हासिल करने के बाद, और जो खामोशी तारी है इस पार्टनरशिप के दौरान 34 पे ये बमुश्किल 39 रन बनाने में कामयाब रहे हैं। चाहे नवाज हो, कासिम अकरम के खिलाफ बॉलिंग करने के लिए, दूसरी जानिब मेहरान मुमताज आज टीम को लीड कर रहे हैं, उमर अमीन। हर गेंद के बाद आपको एक्टिविटी नजर आ रही है। मुबस्सिर बाउंड्री लाइन पर मौजूद हैं, स्पिरिट्स बड़े हाई हैं और गो के कुछ चीज़ों का एक्शन का रिएक्शन आता है, लेकिन इस रिएक्शन के जरिए से आप एक्शन भी क्रिएट करते हैं विकेट हासिल करने को। अच्छा कॉन्टेस्ट चल रहा है यहाँ पे, जमान भी नफीतुली बॉलिंग कर रहे हैं और हुसैन तलत और कासिम अकरम जानते हैं कि क्या सलाहियत है जमान की, इसलिए ओवर अटैक करने नहीं जा रहे। और यहीं पे अगर सिंगल रोटेट होते रहेंगे तो ऑब्वियसली जमान भी थोड़ी सी कोशिश करेंगे कुछ डिफरेंट करने का, और वहाँ पे बाउंड्री बॉल इनको अवेल हो सकती है। तो अच्छी हिकमत अमली नज़र आ रही है, पार्टनरशिप बिल्ड होती नज़र आ रही है। और इसी को हम कंट्रास्ट में अगर देखते हैं मरीना, इस पार्टनरशिप के दौरान गो के बैट्समैन सेट भी हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है बात वगैरह करते हुए, जिसमें आप उस टारगेट्स को अपने सामने सेट कर सकें कि जाना कहाँ पे चाह रहे हैं। वो ऐसा लग रहा है कि अभी तक रावलपिंडी से जीटी रोड पे निकले हैं लाहौर के लिए, और दरमियान में जो शहर आ रहे हैं उसकी तरफ मुड़ते जा रहे हैं। उनको कोई ना कोई टारगेट इनकी टीम ने इनको सेट करके दिया होगा, खुद कप्तान है, इनके जहन में भी मौजूद होगा, एटलीस्ट 160 का होना चाहिए। शॉट पे डिलीवरी, गैप में खेलने की कोशिश है और तलाश कर लिया हुसैन तलत ने। बेहतरीन शॉट, शानदार कनेक्शन, भरपूर आवाज, बड़ी शिद्दत से जरूरत थी चौके की। इसी बात का मैं जिक्र कर रही थी कि अगर स्ट्राइक रोटेट होती रहेगी तो कहीं ना कहीं एक बाउंड्री बॉल जरूर मिलेगी, और उसका भरपूर फायदा उठाया। इसमें क्रेडिट देना पड़ेगा हुसैन तलत को। शॉर्ट पिच डिलीवरी की जमाने इस बार चूक गए थे इन द जोन, यहाँ पे ये नहीं बख्शते, और राइट किया बाउंस को और शानदार प्लेसमेंट हासिल की और 4 रन्स भी। ये ओवर को अच्छा कन्वर्ट कर रहे हैं, आखिरी गेंद अभी बाकी है। एक चौका लगा एक मरतबा फिर जमान का स्पेल, जूंगा तू महंगा, 126 पे 3 लाहौर। Hundred 126 for 3. Lahore Blues, after a great start, has had a difficult 6 overs, although they've stitched together a partnership of 45, 38. They were going great guns before that. Qasim Akram soldiering on because he hasn't had a good tournament. He really needs to put in a performance. Gorgeous evening in Karachi, and never a bad moment to have a Tapal tea lounge, busy as ever, enjoying Tapal tea moment, and just enjoyed his little break. Joining me now is Salman Butt. Good evening, Salman. Good evening, Shaji, and important partnership in progress for Lahore Blues. They have put up a decent platform, and from here, if they can finish well, they can get to a competitive total.
Kashif bowled well in patches with the new ball. Just couldn't find that consistency. He's a very skillful bowler. But now bowling at the death requires completely different skill set. And he'll be tested against two relatively set batters. Qasim has been there for 18 deliveries, Hussain Talat for 23. Crucial phase of the game. Just that use of the bottom hand, won't find the gap, just a single. What do you think, Salman? You was down there in the middle, under lights. How did the pitch look, and what do you think should be a good score? Well, 160 and above, possibly, if the bowling does well, will be a challenging score. But it depends how they bowl. The pitch, we all know since the start of this tournament, under light, it gets better and better. And also we've seen in the last couple of nights that dew starts to come in. And that also makes batting easier in the later part. And the batters, they need to keep that in sight. Santalat will get another single. Yeah, just now we're heading into the winter. So that'll be a factor we need to keep an eye on in the games to come. Last night it did come, although pretty late, but still a factor. If the game is quite tight by that stage, then definitely dew will play a part. Probably these two batters would need to keep this in mind as well when they're setting up a target. I'm pretty sure the amount of time they spend in the middle, they would have got a fair idea how much they want to make in that remaining 3.2 overs. Goes for the big one. Just a single though. At this stage of the innings, this is a very decent bowling effort at the moment. Only ones of every ball, 5 balls bowled, 5 singles taken. And with 7 wickets in hand, now Lahore Blues need to go big. And only 19 balls remaining in the innings. And both the batters, 1 on 33, the other 17 of 20 for Qasim is way too slow at this stage of the innings. He needs to get going, get some big hits. Once again, Hussain Talat hoiks it. Wants to go over mid-wicket but does not connect. So only one. So good over by Kashif. 17 gone. 1-3-2 for 3. They had a very, very good start. They had 80 runs in 9 overs for just 1 wicket. And then since then, well, another 8 overs hasn't yielded much. Just 52. Imran Butt and Umar got out at the wrong time. And then Hussain is guiding the ship, and like Salman was saying, Qasim Akram has used up his time now. This is the time to catch up on that strike rate and go big. At least 30 from here should be a bare minimum that should be thinking. Third man is up in the ring, backward point. Up on the splice, San was late on it. Good ground coverage. Mubassir had to come a long way from the fence. Out cricket of Rawalpindi has been pretty good. Do you like the look of Awais? Again, he bowled well in patches in the first 2 overs. He's a youngster, not very experienced. Well, yes, of course. He's tall, like in the old times, the tall fast bowlers. Is that kind of a structure. And definitely with his height, extra bounce also comes along. And if he can better himself with his fitness and pace, he will be a handful. And this one has been played over mid-wicket region. Will be a 1 bounce boundary. And Qasim Akram's first boundary, I believe, after quite a number of balls. And now he's 21 of 21.
He needed that boundary. Once again, not off the middle of the bat. Looks like just closed the face on it. And it was running away from that fielder at long on. And a boundary after 18 deliveries for Qasim. This one he's bludgeoned it straight. Long on is pretty straight. This time he'll be able to pick up the ball. But Qasim is good with his running, excellent running. Yes, Hussain Talat was the one pushing him back, and credit to him because the danger end was his, and he pushed Qasim Akram, who is also very fit and he's young, made it easily in the end. They just need to go big now. Plenty of wickets in hand, but only 2.5 overs to go. If they can get another 30 runs over here, 169 would be a good, decent total. Young Awais is under pressure. This has gone big. This has gone a long, long way. This is Qasim Akram at his very best. Yes, finally one out of the middle. And this time Qasim Akram launches into this one, pitched up, and he presented full face of the bat, and timing was there. A huge six this one, will give him a lot of confidence. And the young fast bowler pitching it right in the slot. And this is what Qasim would have wished for. Earlier in the over, similar kind of delivery. He just dragged his stroke wide. This time he went straight and finished it. The high front elbow, good strike. Now getting funky. Raza has been impressive with the gloves. The appeal is there, but I don't think it came off the bat. Rashid Riaz confirms that. Yes, one good stroke and then a total premeditation. Trying to get outside the line of off stump, and smartly bowled by the bowler. He brought his pace down so that this stroke becomes difficult for the batter. Had he just played where the ball was, both point and third were up in the circle. Premeditation, it's not a good idea. Now Santalat is looking to join in on the fun of Moramin, strategically placed. It's expensive over there for Awais, but a good one for Lahore Blues. 2 to go, 147 for 3. Current partnership is 66 of 50 balls. Both these batters are taking Lahore to a place which is obviously very, very fightable. If they can bowl well and field well, they possibly can cause problems for Pindi. But they need 2 good last overs, because they have to keep in mind that at times the dew has crept in. And once it's there, batting becomes easier in the last 4 or 5 overs especially. Nawaz has bowled only 2 overs. Kashif into his final over. Was that a good idea to bring the youngster back in the death overs? And I wonder if he will bowl the last over after the way he went for runs in the previous one. Zaman has also bowled 3 overs, so probably he will finish. That over number 18 was a critical one. Umar had options, but he went for the youngster. Qasim Akram has found his groove and finds another boundary. This innings is gathering momentum, and after a dismal start to the season, Qasim Akram is coming good. Yes, and Kashif Ali, every time he's faltered in this innings, it has been the shorter length which hasn't benefited him. Once again, short and allowing the batter to take the advantage, who pulled it brilliantly in the gap, getting 4 runs. And Kashif needs to be
pitching it up right there in the block hole or close to it. They found it hard to get under the ball. Short bowling has proved expensive tonight. 150 has been brought up as well in the meantime. That was that fuller delivery, pace off as well. And that worked well. Just a single at this stage is a good result for the bowler. Third man is up in the ring, backward point, up in the ring. What's Hossain Talat's options? Deep square leg, deep mid-wicket. He's also not shy of improvising. Kashif is not happy with his field. Yeah, he wants to send that fine leg back. That fielder from cover has come in, so there's no one in the deep on the offside, barring that long off fielder. Bludgeon straight, hit Kashif Ali. And it will find that fielder at long off. It was 4 runs. Oh, sluggish work there from Nawaz. And Qasim Akram was very, very alert to the situation. This is excellent from Lahore Blues. Yeah, I hope everything is fine with Kashif's hand, because he did not collect the ball, but his hands in the whole motion, they went and hit the stumps. And this ball hit him. So he's got hit twice on this occasion, once by the ball and then the stumps. Now you're going to see that. Yes. And then he definitely was watching his hand and is in some pain. Soldiering on, 2 deliveries to go for him. Full toss. Might have another look, but I think it was dipping, probably knee height more than anything else. Hossain would feel that he's missed out. Yes, that would have been a no ball had Ali Yunus been the leg umpire. You remember when we guys were playing? Anything above knee height was a no ball. Yeah, but not in the that. case. Glad he's not the umpire. I'm very happy. He's all right in the box. We can have him here, not down there in the middle. I'm sure he's watching. He'll come back, you know that. He'll come back fighting. Excellent finish, Kashif. That's what Salman was suggesting earlier in the over. 19 gone, 157 for 3. That 169 that Salman was talking about at the beginning of our stint is pretty possible now. 170 will give them that psychological boost. 13 runs. Zaman Khan, although might have other ideas. He's the champion death bowler. He thrives in these situations. Probably when he's defending. I don't know if bowling first, does he keep anything in mind that this is the amount of runs that I'm defending? Gives him completely different mindset when he is defending. Here we go. Big shout. It hit the back leg. Umpire walks away. Yes, that seemed to tail in a bit, and with his action, which is obviously like Malinga, the arm coming very roundish, and this release helps in the ball to reverse more than any other actions, and we saw a bit of that. And, it was sliding down the leg side, and there it is. You can see it tailing back at Qasim, hitting his back leg. He mixes up nicely with his slower cutters, bouncers and yorkers. Right in the block hole, an absolute beauty. You cannot do anything with this. That is superb bowling, Zaman Khan.
These are worth in gold. These death bowlers all around the world in leagues. You pay anything to get them. And this one is a slow delivery. It's in the air. A couple of people coming in. And it lands safely. Qasim will come back for the second run. Another great delivery. Exhibition of death bowling there in this over from Zaman. Reverse swinging delivery to start with. Beautiful Yorker. And a magnificent slow delivery. He doesn't waste much time as well. Superb. Yeah, like I was saying, in leagues all around the world, you'll pay anything to get a hot commodity like that. And Zaman, only today we heard that he'll be heading to Australia as well for the Big Bash. And if we praise someone and he doesn't do anything wrong, this has not happened this year. So, first wide of the innings from Zaman. But it's phenomenal to think a couple of years ago he was nowhere. His rise, not just the skill but the temperament he possesses. He's mentally so strong. But this one tailed in the other way for the left-hander. You know what amazes me is that a bowler bowling length and then they premeditate the paddle stroke. And now they know a bowler is bowling every ball as a Yorker and not even once any of these two batters has tried to paddle, whereas this length is more suitable to the paddle stroke. So it's all about premeditation when you talk about the ramp stroke or the paddle. And you think about it, both third man and final leg up in the ring, so it's a high percentage shot at this stage of the innings. Qasim will look for two. Hussain Talat is coming to the danger end. The throw is gone to the keeper's end. But 2 runs will finish the innings. A superb over from Zaman Khan. Really bowled brilliantly. Didn't allow much room or length to the batters. 166. Lahore would think that they've got runs on the board. Handy partnership has really given them a good platform and a good total. Lahore's start was great, but then 3 wickets fell within the space of 7 runs. Then this partnership between these two, 85 of 62, really gave them some hope. Good to see Qasim Akram back amongst the runs. He's struggling with his fitness a little bit towards the end when he ran a couple of quick 2s. 8.35 is the run rate that Rawalpindi will require. But skipper Hussain Talat as well doing a great job leading from the front. Their batting had come under immense pressure in his own performance as well, Hussain Talat's, but he responded well. This is what I was talking about, Zaman. He plays his cricket with a smile on his face. A mixed bag in the field there for Rawalpindi, but look at this batting card, Salman. Some good contributions. Yes, obviously a handy partnership at the top of the order which got them going, and then a good decent partnership to finish off. And credit to the bowlers of Rawalpindi who did not allow these two set batters to hit big. And courtesy some exceptional death bowling, especially from Zaman Khan. Like I said, a bit of a mixed bag for Rawalpindi. Mehran was the pick, 2 for 22. Surprisingly, he didn't bowl his 4 overs, but Umar had plenty of options. No other wickets there for the bowlers, just 1 run out, only 5 extras. It means their discipline was good. And 167 they restricted Lahore Blues to.
Mehran Mumtaz is down there with Akil Samar. Let's join them and have a few words with him. Akil. आपको आज सुपर 8 का पहला मैच खेलने का मौका मिला और मैजिकल ओवर किया। कहाँ 10 रन पर ओवर की औसत के साथ जा रहे थे, 2 बोल्ड किए, तो आपने इस मौके के लिए तैयार थे जिस अंदाज से इसको ग्रैब किया? जी, सबसे पहले अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि मौका मिला और मैंने अपनी टीम के लिए अच्छा किया। फास्ट बॉलर ने अच्छी बॉलिंग की थी, ऊपर से जो साथ मेरे स्पिनर्स कर रहे थे नवाज भी और मूवी, उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की। उसकी वजह से मैं जो मेरी स्ट्रेंथ है स्टंप्स में रहा, कोच ने एक प्लान दिया था उस पर रहा और पहला मैच देखा हुआ था। तो थोड़ा सा जो स्लो बॉल कर रहे थे इस विकेट पे थोड़ा मुश्किल होता है बैट्समैन के लिए, तो वही करने गया, अल्लाह पाक ने सक्सेस दी। इस पिच को कैसे देख रहे हैं? 167 का टारगेट है रावलपिंडी को अपने इस विनिंग मोमेंटम को बरकरार रखने के। जैसे हमारी बैटिंग है, यासर भाई जैसे रन कर रहे हैं, जितने भी बैट्समैन जैसे रन कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम अच्छा चेस करेंगे। वेल डन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। Lahore got off to a wonderful start thanks to Imran Butt, and good to see Umar Sadiq back. He was quick to get into his groove. The rub of green did go with Lahore. Umar Sadiq showing his prowess each side of the wicket. Imran Butt has looked good in this tournament without converting starts into big ones. That was a cracking pull shot of Zaman. This is where that mini collapse started. Umar Sadiq knew as soon as that ball hit the stumps. Rizwan Hussain has been a disappointment this year. And once again, Imran Butt, a soft dismissal after looking so good. But then came Hussain Talat. Guided the ship slowly. They rebuilt it first and then alongside Qasim Akram. They were looking to finish big. Really great effort until Zaman bowled that magnificent last over. 167 is what Rawalpindi would need when they come out to chase. We'll take a short break and we'll join you with the run chase in just about 5 minutes. Second time around, he's been able to pick that up off the leg. Short ball, इस मर्तबा पूरा वक्त मिल गया। चांस है यहाँ पे और आउट हो गए यहाँ पे। And gone. Oh yes. Gone big. This has gone a long, long way.
167, that's the total. And they need to be chased down. A good recovery and a very solid partnership between Qasim Akram and Hussain Talat. 85 of 62. That's why they were able to post 167. Well, now it's all about Rawalpindi, how they will approach this target. Conditions, they don't look very threatening for batters. Well, they need to have a plan. They've got plenty of batting experience, young ones who can take on the challenge. Shouldn't be a big problem for them. Now Lahore Blues, will they be able to contain and defend this total? Well, only time will tell. And then Asif will take ball. My openers are walking out. Should be a good contest. We've seen that runs are available here. And if you bowl tight line and lengths, you will get rewards as well. It's about the momentum early on because Lahore managed to get that. Will Rawalpindi will utilize the power play or not? Well, Hussain Talat, along with the Qasim Akram, delivered what he said at the toss. He was aiming at 150, 160, but he's got 6 more than what they were looking out for. And if you've managed to get there, then it's the opportunity to cash out on it. Yasir Khan was brilliant in his previous outing here at the ground at the National Bank Stadium. He single-handedly took his side to the finishing line. Zishan Malik also has been in good touch. This would be the key, how these two can provide Rawalpindi a start, which would be absolutely essential. Power play has been key to lay a foundation to get the sides whether chasing or setting a total in rhythm. Umaid Asif, talented, tall young man who's looks very old with that hair color, but he isn't. But it's good to see those different styles, different colors. Just adds some bit of action to the national T20. Rashid Riaz is all set to allow Umaid Asif to come through with his first delivery. It's going to be exciting chase. If it happens, it'll go down to the wire. It all depends how the power play goes. Cuts through a little bit off the surface. Tall man, you'd expect a little more bounce than the other bowlers. It's good delivery to start with. There's touch movement there. Stuck on crease. Yasir. But that's what you can expect of Umaid. He's an experienced campaigner. He will hit the deck hard. So you need to adjust because of the slowness of the pitch, but I don't think that it was that big a problem. Lahore batted. Runs are there. To start off with an extra in the chase, and Rawalpindi are off their mark with an extra. Zishan Burnlake is back. We've got Yasir on the other end. And just a little bit exaggerated angle by Umaid. Just trying to cramp him for room because Yasir, he likes to free his arms early on. We could go after anything on a slighter, shorter stuff. That's high in the air, and a chance to catch it. Yes, Lahore Blues strike in the very first over. Kashif Bhatti takes the catch. Umaid Asif has Yasir. That's a big, big blow to Rawalpindi. There was only one fielder protecting that boundary, and straight it went. Yasir, he loves to free his arms, but probably played it very late. He had all the vacant area in front of the square. Just trying to help it on its way. I don't think there will be any problems here. He's very calculated, Umaid Asif. But he got the first breakthrough. That's what was expected of him. Just rolling his wrist, that actually never allowed him to get that distance. Straight to the fielder. One down. Yasir Khan goes back without scoring. 1 for 1.
Captain walks out at number 3, Umar Amin, and very early in the very first over, with just 2 deliveries to the Rawalpindi innings. Lots of games to his name, 22 50s in his T20 career. Fairly good strike rate as well, best of 82. Average maybe, had 3, could be better, 28. Got a huge responsibility over Amin. He's a prolific batter for Rawalpindi. Has dealt with a lot of situations similar like this one. It's just all about momentum. You just get a feeling that Lahore Blues is playing as a team now. After that good partnership, the catch was taken. This is the one, Yasir Khan playing it to Kashif Bhatti. And the celebrations, it's just a team. That's very Umayyad Asif-like. Iron Man's celebration. Off the mark, Umar Amin with that quick single. So important. In a team sport, you play as a team, back each other, celebrate. You just see that everyone's working for the same goal, and that is to win a match. They'll be quite content with this total. And with 1 wicket down of Rawalpindi, they'll be happy with it. That's what is required. And that's actually what Hussain Talat and Qasim Akram did well. They ran really well between the wickets. Soft hands, just trying to rotate strike as much as they can. And then whenever an opportunity was provided for a boundary option, they took it. That's exactly what the formula is to be successful on these surfaces, which are on a slow side. Oh, full toss down the leg side. That's a wide. For a moment, I thought it brushed the thigh. We just missed everything. There was a sound, but I think that maybe the bat was brushing the leg guard. He's just trying to create that angle, trying to cramp them. Zishan Malik back in playing 11, and now he's got a responsibility. The minute it hit the bat, it was going through that gap. What a shot from Zishan Malik. Shot of authority, style, an absolute textbook. Pitched up and punished. These are the deliveries you cherish as a batter. Have a look at that. Full follow through, good balance, good transfer of weight. Never had to move an inch. The room was there, perfect placement. That was a delight to watch. Dot ball to end the over. A wicket, that's a good thing. Some runs also, 7. Nasir has done well since Nisar rather. Since they Salman Irshad left the squad, he's done well to fill those big shoes. And from the word go, he's he would say probably not to let them feel his absence to a certain extent. And Lahore Blues would hope that he would repeat his performance which we've seen with the ball in the past 2 games. Bowling from that University Road end. Umar Amin will provide that sensibility and that calmness that they need to hold one side after losing a batter quickly.
He has the ability to shift gears through the innings. He'll take his time, yes, to start off, but he can really play some good cricketing shots. Zishan might have the aggressor's role. Though in T20 you would want both the batters to score freely. It's just that one will have a little more fatherly figure. All he needs to do is just keep rotating strike, and anything in his zone that is on a slight shorter length, that will definitely, Umar Amin will go and grab that opportunity. But he surely can play the anchor role here. You need someone when you're chasing a total like 167. Beats mid-wicket. There'll be at least a couple here. The positives for Lahore Blues, even from the previous game, one was Usman Qadir's fifer. They'll extract those positives and implement them in this game. The partnership yesterday between Hussain Talat and Qasim Akram was a good one, but they lost both of them lost their wickets back to back and at the wrong time of the game. Today that didn't happen. Can Usman repeat that? The performance where he got a fifer. They'll need a combination of all those things to win it. Why we're talking more about Lahore Blues is just to keep that Super 8 open. Right now, both the Lahore teams are just going down south, and that is just showing us a clear 4 teams for the semi-finals. You need a little bit more fight. Usman, right there. He's bowled so well in the tournament. He's looked so good. He's extracted the surface and the conditions very well. He was very well aware of the conditions. A touch slower, and he knows how to extract and take it to their strengths and rewards. He's a very prolific leg spinner, and obviously wrist spinners have a big say in any format. And bits and pieces are coming together for Lahore Blues. It's all about just putting them in one picture. Interesting fact Farhana, statistician, puts up is that Rawalpindi has not lost a game in this tournament while chasing. 178, 169, 164, they've chased all 3 occasions. Rest of the time, they batted first. So that is an interesting thing, which means they do have their work cut out when they go out to chase, and these are good totals. 178, 169, 164. 178 was against Abbottabad on this ground. That's also important. Where were they chased? It's high in the air. Opportunity. This could be trouble. He didn't get hold of it, and some good catching from Lahore today. Qasim Akram takes the catch, and there we go. Nisar strikes. That's what he's been so good with that new ball. They'll check the front foot, but this looks out, and this looks like trouble for Rawalpindi as the captain goes. I don't understand what the need was there for Umar Amin. No worries there for Nisar, but a very irresponsible shot. That is so much against of Umar Amin's nature that it's incomprehensible. Easy catch by Qasim. There was no need for him, especially for him to do that. All he needed to do was just keep rotating the strike and allow Zishan to play freely. But he's back now. Gone on 4, 2 down on 11. He's been short of runs on the ground here. Today is the day that he's got that platform set to put his hand up for Rawalpindi and say that he's around. Hey, there are his numbers, 123 games, that's a lot. Good strike rate, 91 not out his best. Average, we'd like more of that, 22.
Just when we're trying to build up something that Omar Amin is so good with, Rawalpindi never lost in a chase, they lose their captain. And how many times it happens when you're sitting in a commentary session and you're making your point and the batter or the fielder or bowler does otherwise. It's amazing. It never, you know, goes the other way around. Wherever you are, anywhere in the world, on any field. And it's funny how the commentators are being blamed for their mistake. Commentators curse. It just so happens, I don't know if it's brain fade. Omar is, it's very unlike of him to play that shot. Wasn't in control. Went through with that shot. He's looking to play in the V. You know that Nisar is a tall, fast bowler. He just extracts a bit of extra bounce. I don't know if he judged the length wrong, tried to go through the line and it's just not come onto the bat. It's just skied up. He's so good. This is what he can do, but why doesn't he do it consistently? He's so good at that. When the selectors look at you and say, this is a man for the future. You hope that he keeps flowing runs like that shot. First delivery he faces. Elegance is there. Have a look at that. Right out of the middle of the bat. Holding the pose. That's a delight to watch. Right underneath the eyes. Impeccable timing on this occasion. Wow. Two shots. So good and so authoritative. One on the onside, one through the covers. It's just like when you arrive and you say you mean business. He's trying to overcompensate Umaid Asif. This time slightly on a shorter length. Up in the air, he picked it up nicely. Quick hands on this occasion. Look at that. Just whipped it through. Good boundaries for Haider Ali. That's the potential he has. Goal, 20 for 2. It's so important, Marina, isn't it? Yes, you've lost your captain, you lost 2 wickets, but you got to take the fight back to the opposition. And in small pockets, 2 boundaries, rotate the strike. Let them know that you're here to give a fight. Being in a box when you're chasing a score which is around close to 170, don't want to fall behind. I'm not saying a word. Should have opted for a back foot punch rather than just trying to cut it or guide it to the third. But the runs are there. There's no question about it. The stroke play, they're enjoying out in the middle, Haider and Zishan. Qasim is quick. So was Zishan Malik on that occasion. 3 overs ball, 22 for 2. Yeah, so the big gun, a lot of expectations was on him. He's gone on naught. Zishan is still out in the middle. Captain walks back on 4. But Haider and Zishan, they have the potential to take this run chase home. They've got Nawaz, Mubassir, Raza Mehran. They all can bat. But it's more about these two. They're well settled in. They look in form. They're timing the ball perfectly. It shouldn't be a big worry, but I mean, probably he thought he had that delivery in his zone and he went after it but failed.
Oh, that should be out. That should be out. Was down on one knee, Zishan Malik. Wonder what he was trying to do, but he was dead in front. He's missed it completely. There was nothing of a shot. I'm not sure what he was trying to do against Nisar. The fast bowler trying to sweep him maybe. No worries. Again, they are very calculated there, but have a look at that. How did he thought of sweeping Nisar right in front of the stumps? That's suicide for Rawalpindi. That's suicide for Zishan. Another brain freeze moment probably. 6 for him. 3 down now on 22. Things are turning. Mubassir Khan, the new batter in. Recently one of the members, integral part of the Shaheens, the Pakistan A side. Toured a few times, and he's a very important lower middle order bat who knows how to bat with the tail. Of course, here for Rawalpindi, he's batting high up at number 5. He's the one who has his, I wouldn't say tie, but quite similar, him and Qasim Akram, in what they have to offer, off spin and batting at the same number. Such a tricky wicket, isn't it? Both these fast bowlers, Nisar and Umair, they can extract extra bounce, and you feel that the high arm action would create it, but they don't get that kind of bounce. This wicket is just, I don't know what Zishan is trying to do. Down on one knee, he's nowhere close to that ball. He's trying to work it behind the square on the onside. Zulfikar Jan made his first-class debut this season. It's been highly rated as the umpire was coming up in the ranks. He's got a Zulfikar Jan in his own time, not so long ago, 162 first-class games, Marina. He's been the leading wicket-keeper for quite a few years. 570 catches, 24 stumpings for him. Couldn't play at the highest level, but he surely is looking to come up in the ranks and made his first-class debut as an umpire. And I don't need to repeat who he reminds you of, especially when he's got that hat on, not the baseball cap. Takes you back to the ICC elite panel, Simon Toffel. 4 overs bowled, and it's 22 for 3. हम आप तक पहुंच रहे हैं मुख्तलिफ ज़रियों से, पाकिस्तान भर में पहुंच रहे हैं PTV स्पोर्ट्स पे और AR ऐप की इस ऐप पे और वेबसाइट पे, माइको पे भी, और बाकी की तमाम दुनिया पे आप हमें देख सकते हैं PCB के YouTube और Facebook के चैनल्स पे। और टॉप मुकाबला है, लाहौर ने अपने होने का एहसास दिलाया। फाइनली पहले कमबैक किया, 10 रन पर ओवर के औसत से जाते जाते उसको वापस आने का मौका मिला, और 160 से ज़ायद का टारगेट जो कि एक बड़ा चैलेंज होता रावलपिंडी की टीम के लिए, और वो अब एक कोहे हमालिया बन गया जिसको सर करना होगा। हैदर एक तरफ है, दूसरी तरफ नौजवान मुबस्सिर हैं। उठाकर खेला और मिड ऑन के ऊपर से खेल गए, खूब पिक किया, फौरन रवाना किया। ऐसे कई चौकों की जरूरत है हैदर और रावलपिंडी को। आज अच्छा लग रहा है,
अच्छे टच में लग रहे हैं हैदर अली, और इनका शुमार भी उन्हीं टैलेंटेड बॉयज में होता है जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया हुआ लेकिन टैलेंट से भरपूर है। इस शॉट से आप अंदाजा लगा सकते हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर को मिडॉन के ऊपर से खेलना कभी भी आसान शॉट नहीं होता है, और इन्होंने बहुत ही आसानी से पार कराया वो फील्डर। मुझे सीज़न याद है जब इन्होंने अपने अवलीन सीज़न में फाइनल में खेलते हुए यहीं नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में सेंचुरी स्कोर की थी, और वो एक डिफरेंट फॉर्मेट था, रेड बॉल थी, लॉन्गेस्ट फॉर्मेट था, और उसके बाद से इन्होंने वाइट बॉल में अपनी जगह को मुस्तहकम किया। शानदार फील्डिंग, टॉप क्वालिटी क्रिकेट, बैकफुट की शॉट, और उसके बाद उमर सदीक ने दायरे कैच पे गिरते हुए बड़ा हद तक यकीनी चौका रोका। अच्छी क्रिकेट, अच्छी अप्रोच लगी आज लाहौर ब्लूज भी अलग लगे हैं, और ये ज़रूरी था, ये थोड़ा हर्ट फील करना ज़रूरी था ताकि परफॉर्मेंस निकले, और ये अच्छी एफर्ट है क्योंकि वो जीतना चाहते हैं। बड़ा लंबा सफर तय करना है हैदर और मुबस्सिर को, पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी। सो जहाँ तक हैदर की इनिंग्स का हम बात और सवाल कर रहे हैं, इन्होंने इब्तिदा में अपने बड़े ज़बरदस्त अंदाज से गेंद को पिक करके इसी अंदाज के शॉट जो कभी दिखाया, ऑन साइड के एक बड़े स्ट्रॉन्ग प्लेयर समझे जा रहे थे, और उसके बाद उन्होंने इब्तिदाई इनिंग्स में प्रूव भी किया, लेकिन अपने गेम को शायद चेंज करना पड़ा। ओह, शानदार डिलीवरी, न जाने कैसे बच निकले, बल्कि जख्मों पर नमक छिड़कते हुए गेंद चौके के लिए भी रवाना। काशिफ भट्टी किसको कोसेंगे, बहुत करीब थे विकेट हासिल करने के, लेकिन दूसरी तरफ चौका मिल गया रावलपिंडी को। यहाँ इनसाइड एज हैदर अली की जानिब से लकी बाउंड्री, बहुत तेज आर्मर करते हैं काशिफ भट्टी, फिर आर्मर बहुत तेजी से अंदर आता है इनका बॉल, बहुत ही लकी रहे हैं हैदर। और अकील जो चीज फेवर में जाती है रावलपिंडी में वो है कि इनकी चेजिंग की एबिलिटीज, इन्होंने अच्छे टोटल चेज कर रखे हैं। मजीद बात करेंगे, 5 ओवर्स में 32 रन पर 3 विकेट गवा चुके हैं। एक 178 रन पहले ही मैच में एबटाबाद के अगेंस्ट यहाँ पे चेज किए थे, फाटा के अगेंस्ट 169 रन चेज कर चुके हैं, 164 सियालकोट के अगेंस्ट चेज कर चुके हैं। तो चेज करना इनको पसंद है क्योंकि इनकी बैटिंग में वो डेप्थ है। ऑल्दो 3 विकेट्स गवा चुके हैं, लेकिन स्टिल अभी भी नवाज को आना है। रज़ाउल मुस्तफ़ा बहुत इंप्रेसिव रहे इस पूरे टूर्नामेंट में, विकेट कीपर बैटर हैं, मेहरान भी बैटिंग कर लेते हैं, इसलिए बिलीव रखना होगा कि हो सकता है, कर सकते हैं, पोटेंशियल मौजूद है, एग्जीक्यूट करना होगा। लेकिन अब इनका सामना है पाकिस्तान में इस सीजन की फाइंड कहना होगा इन्हें, हुनैन शाह को। बहुत इम्प्रूव्ड सीजन रहा है ये, शानदार पेस है, अच्छा अग्रेशन है, अच्छा एटीट्यूड है क्रिकेट की तरफ। क्यों ना करें ऐसे चेज, खिता पोटोहार से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, सख्त जान है और साथ साथ कमबैक करने की सलाहियत भी रखते हैं, और अब तक इसी अंदाज से वो मुकाबले जीतते आए हैं। और साथ साथ इनके पास वो नौजवान खिलाड़ी मौजूद हैं जो कि एक नौजवान कप्तान की क़यादत में कभी शादाब। क्विक सिंगल, हालांकि इब्तिदा में आसानी के साथ चेस नहीं करना पड़ा था इस गेंद को, लेकिन फिर भी दूसरे एंड पे गया। और दूसरी जानिब जब उमर अमीन जो कि एक स्टेबिलिटी देते हैं इनकी टीम को, इब्तिदा से इसी रीजन के तहत क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, और चाहे नवाज हों, शादाब हों, या तमाम प्लेयर्स जो कि मुख्तलिफ टीम्स में लेकिन एक दूसरे के साथ मिलकर खेल रखा है इन्होंने, और इसकी वजह से वो जो आपको ऐसे किसी भी टूर्नामेंट में इकट्ठा होगा T20 फॉर्मेट में फ़ौरन से अपने आप को सेटल डाउन करना पड़ता है, यहाँ पे एक दूसरे को अच्छे अंदाज से बैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब तक का सफर इनका बड़ा अच्छा है, और यहाँ से इतना जरूर है कि अगर चेस करने में कामयाब हुआ रावलपिंडी तो बड़ा यादगार चेस बनेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड चांस नहीं है। यहाँ पे कुछ हैदर अली को कमाल करना होगा, क्योंकि अगर ये मैच रावलपिंडी को जीतना है तो इनको ऑल द वे जाना होगा, 20 ओवर खेलने होंगे, और ये अगर 20 ओवर खेलते हैं तो डेफिनेटली ये टारगेट चेज हो जाएगा। एक चीज़ जो सबसे अच्छी लगती है मुझे रावलपिंडी की, जैसे कि पेशावर की है, वो है बेंच स्ट्रेंथ। इनकी बेंच स्ट्रेंथ भी बहुत तगड़ी है पेशावर की तरह। आज ऑल्दो पहले इनके नंबर्स पे नज़र डालते हैं, 15 विकेट्स हासिल कर चुके हैं, 3 विकेट्स इनका बेहतरीन स्कोर है, बेहतरीन विकेट्स हैं। तो इनकी बेंच स्ट्रेंथ की बात करें तो आज शादाब नहीं है, इनके अलावा नासिर नवाज, फैज़ान, अब्दुल फसी और जहांदाद, ये भी बहुत तगड़े प्लेयर हैं सारे। तो टीम्स वही सक्सेसफुल हैं जिनकी बेंच स्ट्रेंथ तगड़ी है, जहाँ पे लाहौर की दोनों टीमें स्ट्रगल कर रही हैं।
हैदर अली बार बार रॉन साइड पर जायजा ले रहे हैं, जहां पर पावर प्ले के आखिरी ओवर में उनको ललचाने के लिए जगह छोड़ी हुई है। थ्रू द लाइन खेलते हुए अच्छा खेलते हैं। तमाम स्टंप्स को एक्सपोज किया है, कदम आगे आए और ये हैदर अली का खासा है, जब वार आता है तो देखने से ताल्लुक रखता है। खूबसूरत चौका, अच्छी प्लेसमेंट है। आज अलग लग रहे हैं, आज जोन में लग रहे हैं, आज मूड में लग रहे हैं। देखिए थोड़ा शफल किया, लेट खेले, काफी करीब था बॉल, कट वाला एग्जैक्टली बॉल नहीं था, लेकिन इसे स्लाइस किया है पॉइंट और थर्ड के दरमियान से। जब आप अच्छे टच में होते हैं, अच्छे रिदम में होते हैं, तब आप ऐसे शॉट्स खेलते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। और ऐसा ही आज लग रहा है, आज सीरियस लग रहे हैं, आज कमिटेड लग रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि कमेंटेटर्स कर्स इनको लगे और ये विकेट गवा दें, क्योंकि ऐसा अक्सर हुआ है मेरे साथ। एक मरतबा फिर जगह बनाई अपने लिए और ये आज खूबसूरती के साथ कर रहे हैं। आपके कहने पे टीम के साथ हो तो हो, आपके साथ ना हो, क्योंकि आप अपनी ज़ात में खुद एक इंस्टीट्यूशन है, यकता हैं, और अब अगर आपको इस तरह का कर्ज हुआ तो फिर क्या कर पाएंगे। लेकिन सो फार सो गुड, लग रहा है कि आपका सफ़र अच्छा गुजरा है कराची का। पानी लग गया, रास आ चुका है आप। बिल्कुल, आपने जितनी भी बातें मेरे लिए की वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। मैं टोटली अग्री करता हूँ। और कराची मेरा आप पसंदीदा शहर है। लाहौर के बाद डेफिनेटली मुझे कराची आना बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छे लोग हैं, आप जैसे दोस्त हैं यहाँ पे, एक वाइब है कराची में। लो फुल टॉस हासिल हो गया, पॉसिबली यॉर्कर की कोशिश थी, सिंगल के लिए खेलेंगे। यहाँ पे रोल भी निभा सकते हैं अली, दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के साथ। हैदर अली जो कि अब सीनियर पार्टनर है, गो कि उम्र में कोई ऐसा फर्क नहीं है दोनों के बीच में। मुबस्सिर और हैदर दोनों अपनी अर्ली 20s में है, लेकिन इसके साथ साथ जो हैदर अली को इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल चुका है, चाहे वो पाकिस्तानी टीम के साथ हो या फिर PSL की फ्रेंचाइजीज के साथ, तो अब उनको इस सिचुएशन को पिक करना और अपने मौक़ों को निकालना शायद ज़्यादा बेहतरी के साथ आएगा। मुबस्सिर ने भी पिछले 3 सालों के दौरान बड़ी क्रिकेट खेली है, मुतासिर भी किया है, लेकिन वो जो अब आस्किंग रेट बढ़ता जा रहा है उसके शायद शान शान ना उनकी बैटिंग की क्वालिटी। टॉप मुकाबला था, लेकिन यहाँ पर एक जगह यकजा हो गए और एक और कॉमेडी आन पड़ी थी, लेकिन बच गए। रावलपिंडी तलवार के किनारे पे जी रहा है, पहले एच निकला था और अब एक दूसरे के करीब पहुंच के धड़कते हुए दिलों के साथ वापस पहुंचना पड़ा। ड्रामाई अंदाज से पावर प्ले मुकम्मल। या इस कंफ्यूजन से गुरेज करना होगा। कॉल की थी हैदर अली ने, आप यहाँ पे मुबस्सिर को कसूरवार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि 4-5 कदम आगे आ गए थे हैदर अली, और लकी रहे कि थ्रो जो है रिजवान की ये गलत एंड पे हुई। ऑल्दो यहाँ पे भी चांस था, लेकिन अगर दूसरे एंड पे बॉलर को भी पकड़ा देते तो वहां पे भी विकेट हासिल होती है। लेकिन इतनी जल्दी सब कुछ होता है कि आपको रिएक्ट करने का टाइम बहुत कम मिलता है, और जब आपके सामने अपॉर्चुनिटी हो तो आप थ्रो करते हैं। 6 ओवर्स के बाद 39 पर 3। अंपायर राशिद रियाज इशारा करेंगे पावर प्ले के इख्तिताम का। तेज रनिंग है और हलचल मचा दी है इन्होंने आने के बाद से, और अब चूंकि फेमसली जब वाइड स्प्रेड होती है फील्ड पोजीशन, तो उसके बाद आपको ज़्यादा इस अंदाज के 1-1, 2-2 रन चुराने का मौका मिलता है। हैदर अली ने इब्तिदा में बड़े धुआंधार अंदाज से 50 के साथ अपने T20 इंटरनेशनल के करियर की शुरुआत की थी, और वो भी इंग्लैंड जैसे ग्राउंड में, लेकिन उसके बाद से बतदरीज एक गिरावट ज़रूर आई इनके करियर में। जोरदार अपील, राउंड द विकेट, और हासिल कर लेंगे हैदर को। बड़ी विकेट हासिल की है, काशिफ भट्टी की पहली कामयाबी। हैदर अली नाखुश, पता नहीं अपने आप से या कैसे, लेकिन ये विकेट मिली। रिएक्शन तो उनका ये था जैसे कि बॉल बल्ले को लगा है, लेकिन पहले इंस्टेंट में ऐसा लगा नहीं हमें। एक बार नजर डालते हैं, क्योंकि विद इन द स्टंप्स बॉल करते हैं, लाइन टू लाइन उनकी बहुत तगड़ी लाइन है। नहीं, ऐसा लगा नहीं कि बल्ला लगा है, अगर लगा भी है तो बहुत माइन्यूट लगा है। ये बॉल लेग स्टंप को लग रही थी। डेफिनेटली अच्छा डिसीजन अंपायर की जानिब से। 23 रन बनाएंगे, एक बार फिर आगाज मिला, उसको कंटिन्यू नहीं रख सके। 40 पर 4।
रावलपिंडी के मैन ऑफ क्राइसिस नवाज आ गए हैं, लेकिन आज लंबा सफर तय करना है। 127 रन 82 गेंदों पे, ना ज्यादा वक्त है ना रन्स कम है। 233 मैचेस में 7 50s बना रखी हैं, और शायद ये आपको वो सब कुछ नहीं बताएगा जब मुख्तलिफ मौक़ों पे ये वाइट बॉल के साथ मुख्तसर फॉर्मेट में मैचेस को फिनिश करते आए, चाहे इंटरनेशनल हो या रावलपिंडी या अपनी रिस्पेक्टिव टीम्स के मुकाबले, चाहे दुबई और शारजा में PSL के मैचेस हों या फिर इसके साथ पाकिस्तान कप में कराची ही में दीगर ग्राउंड्स पे उनके मुकाबले। लेकिन आज एक लंबा सफर तय करना है और हैदर अली को रिप्लेस कर रहे हैं, नए सिरे से पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी। वो एक्शन मैन थे उस पिछली पार्टनरशिप के, ये रिवर्स खेलने के लिए और रन हासिल करेंगे। ये एक्साइटिंग रिएक्शन था हैदर अली का विकेट जब गवाई है उन्होंने, क्योंकि यहाँ से लगा नहीं कि बल्ला लगा है, यहाँ से बॉल लेग स्टंप को लग रहा है, ये तो आसान है, लेकिन उसके बाद ये बल्ला दिखा रहे हैं अंपायर को, एंड तक दिखा रहे हैं, और उसके बाद जब आउट दिया है उसके बाद भी नाखुश रहे हैं, एंड तक बल्ले को देख रहे हैं। काफी इंटरेस्टिंग ये रिएक्शन था हैदर अली की जानिब से। दूसरी जानिब काशिफ भट्टी ने जिस काम के लिए लाए थे अपने तजर्बे का पूरा इस्तेमाल करते हुए कर दिया, लेंथ को चेंज किया और हैदर अली की हलचल को देखते हुए पकड़ लिया। नवाज हर तरह की गेंदों के खिलाफ मुकाबला कर सकते हैं। उन्होंने अभी जब से आमद हुई है उनकी नेशनल T20 में शादाब के साथ मिलके मैच विनिंग कारकर्दगी भी दिखाई थी, और आउट ऑफ नोवेयर अपनी टीम को वापस लाके वो जितवाने में कामयाब रहे थे। फील्ड वाइड स्प्रेड है ऑन साइड पे। मुबस्सिर ने अब तक बड़े शॉट खेलने से इतराज किया और ऐसे ही करेंगे आज भी। इस वक्त तक भी 2 ओवर मुकम्मल काशिफ के कामयाब था। 43 पे 4। यासिर खान और जिशान मलिक इनिंग्स की शुरुआत करने के लिए आए थे। रेड हॉट फॉर्म में थे यासिर, और उनके लिए अगर शुरुआत हासिल हो जाती तो सिर्फ मैटर ऑफ टाइम होता, लेकिन नहीं, उनको जल्द ही आउट कर लिया जब खेलने के लिए चले गए थे शॉर्ट आर्म शॉट, और उसके बाद से जिशान मलिक को हाथ खोलने का मौका मिला, लेकिन फिर दूसरे एंड से उमर अमीन की विकेट हासिल हुई। ये 2 पड़ाव थे जिसके बाद से संभलने में कामयाब अब तक ठीक अंदाज से नहीं हो सके हैं। हैदर अली भी एक और ऐसे बैटर थे जिन्होंने अपनी रेंज ऑफ शॉट्स दिखाने का पहली मरतबा कामयाबी से मुजाहरा पेश किया, लेकिन स्लो वन पे बुरी तरह से बीट हो गए थे बैटर। दूसरी जानिब जीशान, और यूं इनके 3 विकेट्स ऑलरेडी गिर चुके थे पावर प्ले तक, और एक और खिलाड़ी हैदर अली की सूरत में आउट हुआ उसके फौरन बाद, जिसने सम अप किया अब तक की परफॉर्मेंस को। और लाहौर की टेल अप है फाइनली 43 पे 4 रावलपिंडी। और फर्क देखिए दोनों टीमों में, 68 पे कोई विकेट नहीं गवाई थी लाहौर ब्लूज ने, और 43 में 4 विकेट्स गिरा दिए हैं रावलपिंडी ने। ये फर्क है दोनों टीमों में आगाज का, पावर प्ले के में। और अखिल, मुझे थोड़ा अफसोस जरूर हुआ जिस तरह का शॉट उमर अमीन ने खेला, ये हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। टेक्निकली बड़े करेक्ट हैं, प्लीजिंग ऑन आइज हैं, अच्छा खेलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हैं, लेकिन जैसा आज शॉट उन्होंने खेला थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि एक ऐसे प्लेयर का एंड तक रहना ज़रूरी था। उनके साथ जिशान मलिक हैं, हैदर अली को आना था, तब मुबस्सिर को आना था, तो उनको बीइंग अ सीनियर मेंबर खड़े रहना था एंड तक। लेकिन आउट हो जाना एक डिफरेंट चीज़ है, बट जैसा शॉट खेल के आप आउट हुए हैं वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहेगा, जिसकी वजह से अब रावलपिंडी काफ़ी पीछे रह गया। शानदार डिलीवरी एक मरतबा फिर हुनैन की। कई हमारे देखने वाले शायद पहली मरतबा हुनैन को इन एक्शन देख रहे हों, और उनको याद कराते चलें कि अगर वो नाम से या चेहरे से या बॉलिंग एक्शन से मुशाबियत में तलाश कर रहे हैं उनकी सूरत में नसीम शाह को, तो ये बात सच है कि उनके भाई हैं और नौजवान हैं, और लगभग उसी अंदाज से, बल्कि जितने उन्होंने अभी सबूत दे दिए अपने टैलेंट के, शायद उनसे भी वो क्रॉस कर सकते हैं आने वाले दिनों में। ज़रूरत रहेगी अपने वर्कलोड को मैनेज करने की और अपने आप का ख्याल रखने की, जिस अंदाज से वो गेंद करते हैं, क्योंकि फास्ट बॉलर हमेशा से एक असासा तो होते हैं लेकिन वल्नरेबल रहते हैं अपनी फिटनेस के लिहाज से। अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया आपने, लेकिन ये तीनों बहुत तगड़े हैं।
टाइम है टपाल टी का। आज मौसम तेजी के साथ नीचे गिर रहा है। जैकेट्स तो हम सब ने पहन रखी हैं, लेकिन अगर आप टपाल टी पिए तो कोई परवाह नहीं है। आप इस अंदाज से बगैर जैकेट के भी गर्मजोशी के साथ बैठ सकते हैं एक दूसरे के साथ। दो दोस्त इधर बैठे हैं, 4 दोस्त नीचे बैठे हैं, और क्या चाहिए क्रिकेट के साथ अली। क्या बात है अकील एलिया साहब की, क्या बात है। एक मरतबा फिर लपक के आए और मौका नहीं दिया बैट्समैन को कि वो हिलने के लिए सोच भी सकें। ये फास्ट बॉलर की खासियत है, जो कि ना सिर्फ ये कि दिलों को गरमा देता है, बल्कि इसके साथ साथ बैट्समैन को हिलने भी नहीं देता। हरारत तो देखिए हुनैन की। अब रन आउट नहीं चाहिए रावलपिंडी को, क्योंकि ऑलरेडी बहुत पीछे हैं। 4 विकेट्स गिर चुकी हैं। रन रेट जो है रिक्वायर्ड वो 10 से ऊपर जा चुका है। करंट रन रेट 5 का है, और ऐसे मौके पर रन आउट एक क्राइम होगा, और स्पेशली इस पार्टनरशिप को तो बिल्ड होना है। इसके बाद रजा उल मुस्तफ़ा हैं, जो कि एकदम अच्छी इनिंग्स खेल चुके हैं, बट स्टिल यंग हैं, इनएक्सपीरियंस है, हर बार वो नहीं करेंगे। इसलिए इस पार्टनरशिप का लंबा जाना वो इम्पोर्टेंट है। बात की है इनके कप्तान हुसैन तलत ने, जो कि मिड ऑफर इनके साथ मौजूद हैं आके, और उसके बाद लंबे रनअप के साथ एक मरतबा फिर गेंद करने के लिए आएंगे। शानदार स्पेल एक मरतबा फिर हुनैन का। कई मरतबा आपको वो मोमेंट्स चाहिए होते हैं अली, जिससे आप हौसला हासिल कर सकें। गो के ये चेस कर रहे हैं जिनकी आपने खासियत बताई है अब तक, लेकिन इससे पहले बैटिंग करते हुए भी इन्होंने यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रिमार्केबल कमबैक किया था। गो के शादाब आज की शाम मौजूद नहीं है, वहाँ पर 31 पे 42 बनाए थे। नवाज ने पूरे 200 के स्ट्राइक रेट के साथ 36 पे 72 बनाए थे, और 41 पे 4 के बाद एबटाबाद की एक निस्बतन कमज़ोर टीम के खिलाफ ये कमबैक करते हुए 180 का टारगेट जीतने में कामयाब रहे थे। सो वो जो गोशे में कहीं आपके रीसेंट परफॉर्मेंसेस चल रही होती हैं, वो हौसला दे रही होंगी नवाज को। या परफॉर्मेंस का आपने जिक्र किया, एबटाबाद की टीम बेहतर हो रही है। अगर उनके खिलाफ आपने चेज किया तो इसका मतलब है कि आपकी बैटिंग अच्छी है। शानदार परफॉर्मेंस हुनैन की, सिर्फ 1 रन दिया और 5 डॉट डिलीवरीज, 44 पे 4 रावलपिंडी। It's 444, 44 for 4, and Rawalpindi are in trouble. A spot of bother which they haven't been in the recent past, and Hussain Talat to start his over, his first of tonight and 9th of the Lahore bowling effort. 123 runs required and 12 overs. And straight away Nawaz goes over cover. A brilliant stroke. What timing. 6. That's an outstanding stroke. And with it comes up the 50 for Rawalpindi. And they will need something like that, something special from the players, because it's already 4 down. And from here onwards, run rate of 10 per over is required. That shot brings up the 50 for Rawalpindi in the chase. And we discussed it earlier that Rawalpindi hasn't lost a game yet chasing. From 178 to 161, 167, they've chased it all. So the 178 was on this ground. They've done it once with Shadab and Nawaz. Today Nawaz is there, Mubassir can bat. And it was just that one partnership, Hussain Talat and Qasim Akram.
So on your screen are the wickets that fell. The left-hander skying one up and well taken by Qasim Akram. A high one and then poor stroke. Zishan trying to go out of the box LBW and this was well bowled with the arm and Kashif Bhatti gets one for his team. What one partnership can do, Hussain Talat and Qasim Akram, 80 plus, has helped them to get to that desired score of 160 plus. They need exactly that. Two men to put their hand up in the chase. 85 partnership of 62 deliveries. Yes, and that too was controlled by the Rawalpindi bowlers in the death. They bowled brilliantly, did not allow them, because they were in a position where they were only 3 down with that partnership and 7 wickets in hand, and could have been 20-25 more runs had the bowlers not bowled well. So they kept them quiet and 167 became their target, and now in the hunt of that, 52 for 4, and we are in the 9th over and we have already seen a 6 by Mohammad Nawaz. So he loves width. Hussain should not be providing that. No! That is well bowled. No width and you can keep Nawaz quiet. Rob, deep mid-wicket fielder in the deep. Yeah, he'll have to bowl that again. Surprises you, or maybe is a tactic? It's almost at the end of 9. We haven't seen Usman Qadir yet. Got a 5-for in the previous outing here. All the bowlers have got wickets. Kashif Bhatti's got one. Why don't we just tighten the screws, create a bottleneck and get your leading wicket taker? Yeah, absolutely agreed. Once the 4th wicket fell, could have been the best time to bring him on because he can spin the ball both ways, is a wicket taker, an outright one. Once again, Hussain Talat on the legs and lucky to survive with just 1 run. So 10 of this over, and that is what the run rate required is from here onwards. 11 overs remaining, 113 more required. 9 gone, 54 for 4. Well, speak of the man, and he's here. He's chosen the same end where he got the 5 wickets from. Not the same pitch though. But he's come in earlier. He came in the 12th over in the previous game. No due, so he should be able to grip it well. Interesting how he'll tackle the left-hander, Nawaz. Maybe more of a wrong ones. Well, I do not understand. If you can play all around the ground, then why you need to go for these fancy stuff? The very first ball of a bowler on a good line, good length. That's something beyond me. And Nawaz, this time has been cut, and the fielder
Will be two. Easy two this time. It's almost as a batter you're expecting a googly. You know it from a left-hander, he'll bowl one out, spinning away. He was in good position. Or I don't want to take it away from him. He read it off the hand. He's cut it away nicely. And this time comes into the left-hander. That is well bowled. And this is something Usman Qadir extracts the most. With spin, the bounce that we see in his deliveries is something unique. And if he can be consistent with that, he can trouble most of the batters. Once again, it's too much variety. Every ball, one leg spin, one googly. And this is something which is not good. Sometimes you just feel that he is thinking, I don't want him to hit me with the spin. Though he has got two men in the deep, little wide, long on, and now well, it's for the right hander. The guy is getting squarer, otherwise the cow corner placed for Nawaz. Yes, now that the 4 deliveries have gone, 2 dots, now these fielders need to finish on the circle. Because you can't have the point going that in and allowing bigger gaps. Once again, played on the leg side. Batters looking for 2 and the fielder converging and does well. Restricts them to 1. So good over to start. 4 runs of it. 58 it is. And Usman Qadir's 5 wickets in the previous game that he played over here, and the batters trying to go big on him. He was flighting and spinning the ball both ways, googly, and no answer to that from the batter. And this one again going for a big hoik over mid-wicket and only succeeding in being caught. And then this flipper off the back foot, once again caught on the boundary, and this is his 5th one. So 4 dismissals of the same mode. More than a couple of those, Usman gave flight and invited the batters to go for those big ones. That's a major thing. Remember, Shtaq Ahmed used to say, don't get scared of being hit. Leg spinners do go for runs, but you're the wicket-taking option. You've got to drag the batter's front foot out so that he goes for that shot. Takes that invitation. That was a nothing delivery. I don't know what he got, nothing on it, wide. Qasim Akram, first ball, he fires it down the leg side. Very lucky that the batter did not get anything on it. Yeah, very well done. You think of any modern day T20 spinners, wrist spinners who offer flight. Nowadays it's all about, yes, turning the ball, but they are so fast and quick through their over, bowling flatter trajectories. I wish it becomes all about turning the ball, because we hardly see anybody turn the ball. These young spinners are just too fast and too furious, quicker through the air, lower trajectory, and almost no spin on the ball. Yeah, it just so becomes the norm that you know that the batters are going to go after you, so there's more opportunities of getting wickets, even on a very okay delivery. It just comes with the longer version of the game where the batters have more time and you have to create those opportunities as a spinner. With this 10.97 required run rate, both Qasim and Qadir have a very good opportunity to take a wicket. Skandar, the problem with this flat trajectory and no spin bowling option is that if a good batter is playing, he will hardly take a risk and will also score 10 and 12 runs in the over. So it is the mindset. The batters, if they are good and capable, no issues to take 10 or 12 runs of a bowler who is bowling short, wide, quicker through the air. This could be and has to be the phase where both Nawaz and Mubassir will be looking to score more runs. Maybe throw
Qasim Akram off his focus, try to get runs because you require more than 11.3 runs in over. So they've got to attack someone for a couple of overs here, and this could be the period. But what's happening is that they're just finding fielders and singles are coming in. That won't be enough. This last one was well bowled in the block hole, driven down, and it's the over. 11 gone, 64 for 4, Pindi. They started very well. They were going more than 10 runs and over in the first 7 overs. Then there was a bit of a hiccup. I'm interested in knowing how much Lahore Blues got in their last 5. 48. 30 balls, 48. There's a big gap there, 91 compared to the 64. Full toss, catch it is the call, and it's been taken. Oh, he's dropped it. Omar Siddiq right down there, he's dropped that catch. He's just getting a feeling something's got to give. They have to attack someone. We'll take the chances. And that chance is spilled. Yes, a simple, straightforward take, and he never had it in his hands. This time he pushes it on the leg, and it's a wide delivery. So this is where sides lose the initiative. If you don't take easy chances, Umar Siddiq this time, he's the culprit, and he's cost his side an important wicket. We were just talking about Lahore Blues scoring rates. They got a good power play, 61 in the power play. Then over 7 to 15, they got 57 for 3. They did lose wickets. Talking about captaincy, you got to have your best fielders on the key catching positions because it is more than 11 runs per over required. So singles don't matter. It's another chance, and this time it's taken. Umar Siddiq again, and the bowler must have had his heart in his mouth unless it was taken. So Nawaz gone. It's a big wicket. 66 for 5 now, Pindi. Front foot is okay. That should allow Usman Qadir to register his first wicket in the match. And you can't really blame what the batter is trying to do because they need 12 and over. He has to take a chance, and it's gone straight down Umar Siddiq's throat. 15 for Nawaz, 66 for 5. Seven games, good strike rate. Well, actually very good strike rate from what we've seen of him. 187.5, 42 not out his best, and he's got to do better than that best if the sides wants to get closer to that 167. Now this is good. There's a slip in now. Well bowled. And this one might be a run out if it hits directly, and the fielder just missing the stumps. And good backing up by the long on fielder. No run in the process. And Usman Qadir, he's bowling well. And he's a new batter. Why would you rush at him for a single? He's trying to get his bearings right. Putting yourself in trouble coming halfway down, Mubassir. Have a look at this. Yes, once again, well bowled. And where's Mubassir Khan going? That would have been suicide for him and his side. Usman Qadir needs to finish this over really well. And he cuts, and Umaid Asif
fumbles and in the process gives 1 run. Moving, moving. No overthrows will be conceded. So 12 gone, 67 for 5. रावलपिंडी के सफर में लगता है कि आज फाइनली दरार आ जाएगी। नवाज का फैक्टर भी माइनस हो चुका है और लाहौर को शायद इससे ज्यादा जरूरत से फतह दरकार नहीं होगी। फाइनली उनकी टेल अप है, शिकंजा उन्होंने कस के रखा हुआ है और सिर्फ उनको इन चीज़ों के साथ लेकर चलना है। अब तक ऑलरेडी इनके कप्तान हुसैन तलत ने अपने समेत 7 बॉलर आजमा लिए और उसकी वजह से इनके ऑप्शंस भी वाइड ओपन हो गए। सिंगल और एक मरतबा फिर यस नो और अगर ये थ्रो राइट ऑन बनी होती तो फर्क क्रिएट हो सकता था, दूसरी एंड से भी हो सकता था। और ऐसे मैच में जहां पर अब तक की नाकाबिले शिकस्त टीम उस टीम से हारने के करीब हो जिसको कोई फतह न मिले, उसमें से अंदाज की गड़बड़ तो हो जाती है शाफा से। जी बिल्कुल, और रावलपिंडी जिस तरह पावर प्ले में उनकी पिटाई हुई, लगता है उसके बाद रिकवर नहीं कर पाए। हालांकि बाद में बॉलिंग और फील्डिंग कदरे बेहतर थी, लेकिन बैटिंग तो बिल्कुल डिजास्ट्रस रही। 1, 11, 22, 40, 66 विकेटें गिरती ही चली गई, कोई पार्टनरशिप नहीं लगी। एक मरतबा फिर सॉफ्ट हैंड से खेल कर दूसरे रन के लिए भागने की कोशिश की है, लपक के आए हैं फील्डर और अच्छी रनिंग के जरिए से इस क्लियर एक था उसको 2 में बदलने में कामयाब रहे। ये टॉप क्वालिटी क्रिकेट जरूर है, लेकिन इसके साथ साथ उनको डेवलप करने के लिए बैकअप में बाउंड्रीज भी चाहिए। जी बिल्कुल चाहिए, और अच्छी रनिंग तो बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखिए रजा उल हसन काफी तेज भागे, ये अच्छी टेक्निक है, अच्छा टर्न किया और स्ट्रेट लाइन में भागे, आखिर में डाइव भी लगाई। ये अच्छी टेक्निक है किसी भी यंगस्टर के लिए। शॉर्ट बॉल मिल गई, बल्कि फुल टॉस बना के इसको कनेक्ट कर दिया 4 रन के लिए। मुबस्सिर जो कि बड़ी देर से ताक में थे, ऐसी गेंद के पूरा फायदा उठाया चौके के लिए। रॉन्ग लाइन, हुसैन तलत चूके लाइन में भी और लेंथ में भी, फाइन लेग का फील्डर ऊपर हो दायरे में तो ये बॉल एक बिल्कुल तोहफा है, और इस तोहफे को वसूल किया, कबूल किया मुबस्सिर ने। पिंडी को मजीद ऐसी बाउंड्रीज की जरूरत है, बहुत बुरी तरह लड़खड़ाई है इनकी बारी। अच्छी फील्डिंग, एक मरतबा फिर दायरे कैच पे हिलने का मौका नहीं दिया कासिम अकरम ने। 2 बाउंड्रीज आई हैं अब तक शाह फैसल इस पावर प्ले के बाद से, और दोनों हुसैन तलत के खिलाफ आई हैं। गो कि आप उनको मुकम्मल तौर पर मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते, लेकिन अब चूंकि 7 बॉलर आजमा चुके हैं तो उनके पास खुला ऑप्शन है कि वो गो फॉर द किल के लिए भी अपने ऑप्शन को डिवाइस कर सकें कि जिस अंदाज से वो इन बाकी की 5 विकेट्स को हासिल करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो अभी हलचल है रावलपिंडी के बैट्समैन में, वो रन रेट के पीछे नहीं जा रहे, वो क्लियरली अभी भी चेस करने के लिए जाएंगे। जी ये दोनों काफी अच्छे प्लेयर्स हैं रावलपिंडी के, इसलिए वो फाइट तो जारी रखेंगे। रजा उल हसन की यहाँ पे इनिंग्स बहुत यादगार थी इस टूर्नामेंट के इब्तिदाई राउंड में, जब एक मरतबा फिर उनकी टीम मुश्किलात का शिकार थी। उन्होंने 42 रन बनाए। उस मौके पर जहादात के साथ उनकी एक पार्टनरशिप हुई थी, लेकिन मैच विनिंग इनिंग्स जो है वो रजा उल हसन की थी। अभी भी आते ही उन्होंने हलचल मचाई, तेज रनिंग हो रही है, एक बाउंड्री भी आई। मुबस्सिर 18 पे खेल रहे हैं 23 गेंदों पे, जनरली उनका स्ट्राइक रेट इससे बहुत बेहतर होता है। तो जब तक ये दोनों हैं मुझे लगता है आपको फाइट नजर आएगी, लेकिन पिंडी के लिए इन दोनों का मजीद 4-5 ओवर खेलना जरूरी है। रजा के पास ही स्ट्राइक रहेगा। दूसरा ओवर मुकम्मल हुआ हुसैन तलत का, 76 पे 5 रावलपिंडी। रात बाकी और कराची के नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में रात भी बाकी, और साथ साथ चाय की प्याली भी अपने जोबन पे। चपाल टी का ये कॉर्नर जहां पर आकर आप भी
चाय से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। टेम्परेचर फाइनली तेजी के साथ नीचे की जाना शुरू हो चुके हैं। कराची में अब लेट टीन्स में टेम्परेचर मौजूद है, लेकिन जितनी गहमा गहमी है और उसके साथ से चाय के दौर चल रहे हैं, अभी भी शायद सर्दी का एहसास आपको नहीं होता। उस्मान कादिर अपने तीसरे ओवर के लिए पिछले मैच से उन्होंने अपने रिदम को तलाश किया था। ये भी कैंप से होके आए हैं जो कि उनको पहले फेस में ना रहने की वजह दे गए थे। जिस तरह की बॉलिंग उस्मान यहाँ कर रहे हैं, अगर ये कंसिस्टेंटली करते रहे तो इस बात में तो कोई शको शुबा नहीं है कि हुनर के एतबार से या स्किल के एतबार से ये पाकिस्तान के बेस्ट लेग स्पिनर हैं। कंसिस्टेंसी इनका इशू रहा है, लेकिन इस लेवल पे तो छाए हुए हैं। ऑफ द बैकफुट पूरा फायदा उठाया क्रीज का और फायर पावर भी दी मुबस्सिर ने। चौका लगाने के बाद हौसला बुलंद था, छक्के के साथ बैकअप किया। ये कमेंटेटर्स कर्स जो है, ये प्लेयर्स इसे पसंद नहीं करेंगे। उस्मान की तारीफ की, बिल्ड किया उन्हें, लेकिन ये एक लॉन्ग हॉप थी और यही वो इनकी कमी है जिसकी वजह से अभी तक ये इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना वो मकाम हासिल नहीं कर सके जितना कि उनके पास हुनर है। और उससे अच्छा कमबैक किया है उस्मान कादिर ने। शानदार टर्न एंड बाउंस हासिल हुआ। मुबस्सिर को उन्होंने ऑलमोस्ट पकड़ लिया था। इससे अच्छी गेंद आपको देखने को मिल नहीं सकती। फिजिंग लेग ब्रेक थी और कितना बाउंस था इस बॉल में टर्न के साथ साथ। वंस अगेन ऑफ द बैक फुट, लेकिन इस मरतबा फील्डर की जानिब खेल बैठे इमरान ने कोई गलती नहीं की इस आसान कैच को हासिल करने में। मुबस्सिर की 24 रन की रेजिस्टेंस का फाइनली खात्मा हुआ। दूसरी विकेट कमा ली उस्मान कादिर ने। थोड़ा सा बॉल पीछे था, ज्यादा पीछे नहीं था, लेकिन मुबस्सिर जो शॉट रिपीट करना चाह रहे थे ओवर के इब्तिदा में जो उन्होंने छक्का मारा था, ये देखिए ज्यादा पीछे नहीं था, थोड़ा सा ऑफ द विकेट बॉल हरी हुआ और मुबस्सिर लेट हो गए अपने शॉट में, टाइमिंग हासिल नहीं कर सके और ये एक विकेट जरूरी थी लाहौर के लिए। मैच में कंट्रोल दोबारा रीगेन किया मुबस्सिर, 24 रन बनाकर आउट हुए रावलपिंडी 83 पे 6। मेहरान मुमताज जिनके हौसले बुलंद होंगे पहली इनिंग्स खत्म होने के बाद, जिन्होंने अपने मैजिकल ओवर के साथ 2 खिलाड़ियों को बोल्ड किया था और जहां पर फ्लाई करती जा रही थी लाहौर ब्लूज की टीम, उसको उन्होंने रोका तो ज़रूर, लेकिन इसके बावजूद बड़ा टारगेट इनके सामने आ गया है। उनका असल काम लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग करना है, लेकिन अब हो सकता है कि अपने इरादों को तब्दील करें क्योंकि 84 रन्स के पीछे जो उनको जाना है, सिर्फ 4 विकेट्स बाकी रह गई हैं। रन्स के लिहाज से आधे हासिल किए हैं, आधे से ज़ायद 1 विकेट गंवा दिए और ओवर भी अब इसके बाद कम होते जाएंगे। सिर्फ 6 ओवर और 2 गेंदों का खेल बाकी रह गए, जिसके बायस शायद वो इस बात की कोशिश करें कि अब बचाने के लिए जाएं अपनी रन रेट को और गो के सारे मुकाबले अब तक जीतते आए, लेकिन आखिरी लम्हात में अगर कोई उसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ता है तो उसको रोक सके। इनसाइड एज लगा, मतलब फिर लेग स्पिनर था, थोड़ा सा स्लाइड हुआ बॉल, मुबस्सिर टाइमिंग हासिल नहीं कर सके, सीधा फील्डर के पास गया। इमरान बट ऐसे कैच छोड़ा नहीं करते। सेफेस्ट पेयर ऑफ हैंड्स इन पाकिस्तान। ओह, पूरी कोशिश कर ली थी एक यादगार कैच बनाने की निसार ने, लेकिन असल काम मुश्किल करने के बाद गेंद हथेली पे आने के बाद निकल गई। एक और विकेट होती उस्मान कादिर की, लेकिन हो ना सकी। 84 पे 6। बहुत ही शानदार एफर्ट थी निसार की, व्हील फास्ट बॉलर हैं, लेकिन एथलेटिक नजर आए, हवा में छलांग लगाते हुए गेंद को कैच करने की कोशिश की। कह सकते हैं कि चांस तो हाफ अ चांस था, लेकिन बाउंड्री बचा ली, जिसकी उतनी ही इंपॉर्टेंस है इस वक्त पे। 14 के बाद 84 पे 6।
निसार ने अच्छी कोशिश की थी। वैसे भी आपको दायरे के अंदर चाहे पावर प्ले के ओवरों या बाद के चौकन्ने रहना होता है, जिसमें आपको खुद एंटिसिपेट करना हो, और असल काम इसी की बात से उन्होंने कर लिया था। जिन्होंने एंटिसिपेट करते हुए वो डाइव लगाई थी लेकिन मुकम्मल ना कर सके कैच को। एक मरतबा फिर एक रन बनाकर दूसरे एंड पे गए हैं लेकिन जाकर हिट कर गई है स्टंप्स पे। ये गेंद क्लोज मामला होगा। एक मरतबा फिर जा रहा है केस अपस्टेयर्स। कप्तान हुसैन तलत थे, मेहरान मुमताज स्ट्रगल कर रहे थे। स्क्वायर ऑफ द विकेट उस्मान शायद खड़े थे, उन्होंने तो अपना सिग्नल दे दिया है, लेकिन तीसरे अंपायर अभी देखना चाहेंगे रिप्ले को। इंपॉर्टेंट चीज देखनी होगी कि क्या मेहरान ने अपना बल्ला ड्रैग किया या क्रीज के ऊपर प्लॉन्क किया, और बल्ला भी हवा में भी है, लाइन से पीछे है बेशक, लेकिन आप देखिए स्ट्रेच उन्होंने बिल्कुल नहीं किया, और ये एक अच्छी टेक्निक नहीं है किसी भी यंगस्टर के लिए। वापसी होगी यहां मेहरान मुमताज की, और रावलपिंडी की शाम बद से बदतर होती चली जा रही है। जी हां, कंफर्मेशन आ गई। मेहरान मुमताज एक रन बनाकर वापस हुए। रावलपिंडी 84 पर 7। नौजवान जमान अब बैटिंग करने के लिए आए हैं, लेकिन इससे पहले वो अपना काम शायद समझ रहे हो कि कर चुके थे, और अब वो वक्त आन पहुंचा है कि 20 ओवर मुकम्मल खेलने की कोशिश करे रावलपिंडी, और दूसरी जानिब लाहौर ब्लूज अपनी पहली फतह की जानिब गामजन। और बड़े माने रखेगी शाह फैसल ये फतह लाहौर अगर इसको मुमकिन कर लेता है, और जितना बड़ा मार्जिन होगा, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा भी होगा, क्योंकि जिस अंदाज की पोजीशन में इस वक्त है उनके लिए क्रूशल होगा कि बड़े मार्जिन से जीतें। गो के रन शायद मयसर था ऐसे मौके पे, लेकिन एक तो पूरा क्रेडिट जाएगा हुसैन तलत को, और उसके साथ साथ लेजी रहे। डाइव लगाना तो कुजा, उन्होंने बल्ले को ना ड्रैग करना, मुनासिब झुकना कंसिडर किया। थोड़ा मेहरान ने लेट स्टार्ट भी इसलिए लिया कि बैकफुट पे थे जब ये शॉट उन्होंने खेली, तो उनको अपना मोमेंटम चेंज करना था। रज़ाउल हसन थोड़ी सी तिबी इमदाद जरूर चाहिए, क्योंकि बॉल सीधा उनकी कलाई पर जाकर लगी। और मैजिक स्प्रे रज़ाउल हसन को मैजिक स्प्रे कर रहे हैं। कलाई पे बॉल लगा, थोड़ा सा चेंज ऑफ पेस था, पहले अपना शॉट खेल गए रजा, गेंद ताखीर से आई, इसीलिए उन्हें सीधा जाके लगा जो बोनी पार्ट है वहां पे। स्प्रे कितना असर करेगा वक्ती तौर पे, वो बिल्कुल तैयार तो हो गए हैं, लेकिन बिल्कुल सीधा जाके लगा, और कोई उन्होंने एल्बो गार्ड वगैरह भी नहीं पहनना मुनासिब समझा। यह नौजवान है रज़ाउल हसन, जिस तरह से हमने चर्चा किया से पहले, एक बड़ी अच्छी इनिंग्स खेल रखी है। बैटिंग का पूरा मोशन उन्होंने कंप्लीट नहीं किया था, लेकिन साथ ही उन्होंने कॉल किया। फुल टॉस थी, अंपायर देखना चाहेंगे हाइट इसकी शायद, क्योंकि ज्यादा तवील कामत नहीं है रज़ाउल हसन। लाहौर ब्लूज को बड़ी शिद्दत से इस फतह की ज़रूरत है। अब तक एक भी विक्ट्री उनके पाले में नहीं आ सकी है, और साथ साथ नेट रन रेट भी उनकी बेहतर होगी, और बल्कि वो शायद इवन स्टीवंस के यानी कि न्यूट्रलाइज करने के करीब पहुंच सकें। रावलपिंडी 3 में से 3 जीता है, वो अफोर्ड कर सकता है आने वाले मुकाबलों में। और सुपर 8 का मरहला ट्रूली वेल एंड ट्रूली अब बन जाएगा तमाम सुपर टीम्स के इस कशाकश में एक दूसरे के साथ, क्योंकि उसके बाद से आपको बिजनेस एंड की जाने बढ़ते हुए याद कराते चलें कि कल का दिन गैप है, आपको फिर टीम्स को अपने आप को एक दफ़ा फिर रीअलाइन करने का मौका मिलेगा, क्योंकि अब तक और कल के बाद से दोबारा बैक टू बैक हर टीम ने मुकाबले खेलने हैं, और लामहला इसमें शाह फैसल ऐसा भी होगा कि एक टीम रात को या दोपहर का मुकाबला खेलेगी और अगली सुबह में आकर उसको एक मरतबा फिर आना पड़ेगा। जबरदस्त उमैद आसिफ ने सरप्राइज किया स्लो वन से, स्लो बाउंसर से, और अब आने वाले बैटर जमान को भी
जमान ने लगता है कि अब अपने इरादे हटा दिए रावलपिंडी के इस डायरेक्शन के बाद कि वो शायद अपने आने वाले इन 5 ओवर और गेंद को प्ले आउट करने की कोशिश करें। लेकिन लोअर ऑर्डर की स्ट्रेंथ होती है, वो हिट लगाना ज्यादा पसंद करते हैं। ज्यादा जब सोच समझ कर बैटिंग करने की कोशिश करते हैं तो फिर वो अपनी बेयरिंग खो बैठते हैं। और यही जमान ने किया। गेंद हवा में है, फील्डर आ रहे हैं नीचे और ड्रॉप कर दिया। उमर सद्दीक बॉल आज पीछा करती रही है इनका। एक कैच जरूर पकड़ा लेकिन ये दूसरा कैच ड्रॉप कर दिया। 86 पे 7 रावलपिंडी। हो सकता है कि जितनी बुलंदी में गेंद गई इसको खो बैठे हों या जहन में कहीं लाहौर ब्लूज के वो लाहौर की स्मॉग हो जो कि कराची में शायद कुछ हद तक है लेकिन उतनी नहीं है और कहीं भी नहीं लगा था कि गेंद के करीब पहुंचे हो। माइल्स अवे, बॉल से बहुत ही दूर थे। वैसे तो ये विकेट कीपर विकेट कीपिंग भी करते हैं और अच्छे फील्डर हैं, लेकिन आज की शाम 2 कैचेस उन्होंने ड्रॉप किए और ये तो बिल्कुल ही मजाका खेज अंदाज से मिस जज किया। खुद भी मुस्कुरा दिए, शायद उन्हें खुद भी यकीन नहीं आ रहा कि आज क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन फिर दूसरी तरफ से जमान ने उठा दिया और एक और मौका दिया और एक और मर्तबा बच गए इमरान बट उन तमाम में जो कि आप अगर फहरिस्त मुरतब करें तो हर तरह से नंबर 1 पे होंगे फील्डिंग में। क्या जमान इस किस्मत का कुछ फायदा उठा पाएंगे? ये साइट आप क्रिकेट फील्ड पे कम ही देखते हैं। इमरान बट के हाथों से कैच निकल जाए ऐसा कम कम देखने में मिलता है। जमान ने भी कोशिश की कि वो उनकी फील्डर्स को आजमाइश में रखेंगे, बॉटम हैंड का ज्यादा इस्तेमाल कर गए और ये भी गलत पोजीशन में आ गए थे। बहुत ज्यादा लो कैच करने की कोशिश की जो कि आइडियल तरीका नहीं होता। तो इस चीज की भी निशानदेही करता है कि वो भी मिस जज कर गए थे। लाहौर ब्लूज कराची में आया, हो सकता है उन्होंने कराची के कुछ जो क्विक इनिंग्स ब्रेक होता है उसमें सौगात खाई हो, लेकिन उसके बाद बटर फिंगर्स को वो क्या क्लियर करना भूल गए या फिर जरूरत से ज्यादा एक्साइटेड हैं। फतह अभी भी शायद हासिल हो जाए लेकिन मार्जिन जरूर इंपैक्ट क्रिएट करेगा उनके लिए। बट विद बटर फिंगर्स, ये अच्छा कहा आपने। उस्मान कादिर जो कि मलाल में मुब्तला होंगे, पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर निसार थे। इस ओवर की इब्तिदा में इमरान बट उन तमाम में जो कि टॉप ऑफ द लाइन फील्डर शुमार किए जाते हैं। स्लिप में तो ये आलमी शोहरत याफ्ता है और डीप में भी बड़ी अच्छी फील्डिंग कर लेते हैं। आसान तरीन कैच था बज़ाहिर। रजा ने गैप तलाश करने की कोशिश की और एक और मरतबा गेंद हाथों में आए बगैर निकल गई। पलट के आए दूसरा रन पूरा करने के लिए। जमान ने फौरन इस मौके को सेंस किया, डेंजर एंड की जानिब भागे। और ये लीजिए, कासिम अकरम का शुमार भी बेहतरीन फील्डर्स में होता है और आप उस्मान कादिर की फ्रस्ट्रेशन का अंदाजा लगाइए कि जब टीम के 2 बेस्ट फील्डर्स आपकी बॉलिंग पे कैच ड्रॉप कर दें और मिस फील्डिंग कर दें तो फ्रस्ट्रेशन तो होती है। ओके, सो पूरा इंश्योर किया कि इस मरतबा कहीं निकल ना जाए, लेकिन रिजवान कुछ ट्रबल में लग रहे हैं, पॉसिबली अपने बैलेंस को गंवाने के बाद या अपने दाईं कोहनी के बल पे गिरते हुए। उस्मान कादिर जो कि क्लियरली 2 विकेट्स और डिजर्व कर रहे थे, उन्होंने अपना कोटा मुकम्मल किया। ये पहला ड्रॉप कैच उमर सिद्दीक, ये निसार, ये अच्छी एफर्ट कही जाएगी। मुश्किल कैच था, तमाम में से मुश्किल कैच यही था। और ये कैच क्योंकि बॉल काफी देर हवा में रहा, एंड पे आपको लगेगा कि मुश्किल कैच था लेकिन उमर के पास बहुत ज्यादा टाइम था गेंद के नीचे आने का और ये सबसे बेहतरीन फील्डर और सबसे आसान कैच। 16 के बाद 90 पर 7। Right, Lahore Blues is trying their best to delay their win because they're not catching anything. 4 drop catches
of Usman Kadir. Oh, that's nicely driven, but straight to the man. What could be the reason, Marina Iqbal? Taking it too lightly? I feel for him. Should have taken the fifer. Disappointment. And I don't know who you should blame, because 5 drop catches, 4 of his bowling. That's disappointment. That's literally pathetic. They, apart from Nisar, other catches were very casual regulation catches. Smacked away through covers. Beautiful shot. He has the ability, Raza. We have seen him play some good innings. Maybe the score is a little too much, but he's still trying his best. Yeah, width on offer, and Raza takes it gratefully. Just the hands coming in. Good pace that actually allowed him to generate that power behind that shot. And just struggling a little bit to find the right line, probably. Length wasn't that bad. And again, but this time straight to the man. Yeah, talking about the drop catches, all these fielders, they're good fielders. We talk about Imran Butt, is one of the best in the country. Umar Siddiq is one of the better fielders. I believe they're just not concentrating enough. They're taking this situation too casually. And Marina, remember, they're at the bottom of the table. They need to win and win big. Because by end, you need to look at the net run rate too. Had they taken those catches, match would have been over by now. And they would have won by a big margin, and that would have boosted their net run rate. That hasn't happened. Marina wants to have a look at those catches again. Yeah, it should have been game over. I don't know what the problem is actually. I mean, they have been practicing under lights, so that equation is out. But for me, I think the only problem is where they are taking and gathering that ball. Very low. You need to keep your hands up in front of your eye line. When you take it, that was actually totally misjudged. But even look at that Imran Butt. Oh, that's smashed. That's traveling, and that's gone for a maximum. He's not going to give up. Zaman taking on Hunain Shah. They can't drop this one because it's gone all the way. There is no chance they're dropping this one. Beautiful shot by Zaman. He's trying, he's swinging hard. Look at that. Great swing of the bat. Not the prettiest of the shots, but he will take it. Eyes wide open. Cow corner. 6. That's good delivery. Good follow-up delivery. It's moving away from him, trying to create that room. Ends up with a dot ball. 101 for 7 after 17. When you look at those drop catches, my only concern is where the hands are. Look at that. Very low. Normally, whenever you're taking a high catch, you have to keep your hands way above your eye line, so that even if you miss it out, you have a chance to grab it on rebound. But all these catches, if you look at the hands, they were very below the eye line. And at that height, the ball is literally out of your sight. So you're just depending on the feel or just judging what the line might be. So if you look at that, all these drop catches, they actually tried to collect them way below their eye line. Absolutely. Spot on. And Imran Butt usually is a very safe fielder. In the slips though, he's the best slip fielder. Nisar, 2 for 4 in his 2 overs. He's been that live wire too for Lahore Blues since his arrival. Bowled beautifully in the first game that he was given the opportunity. Yeah, he's replaced Salman Irshad in this side of Lahore Blues, and he has never looked back after that.
He's taken wickets in every game. Handy with the bat too. And he's extracted some extra bounce from this pitch because of his action, because of his wrist, the whip he gets. Yeah, he's very calculated in his line and length as well. He knows and understands his role. From other end, it's usually Umaid Asif. Oh, that's gone. Should be gone. Yes, right in the block hole. Zaman, it was too good for him. But Nisar, you have to give credit to him. He's been mixing it up nicely, but at a very good pace. Zaman has been undone by a brilliant Yorker. Yeah, that's his quality. He pushed the batter on the back foot and then bowled a fuller one. No problems there for Nisar. That's smart bowling. Yorker. Absolutely. Well, he's given it out. Can't say more. 102 for 8. Kashif, the new man in. 2 runs in his entire career. Wow. Because the batting had been so brilliant. He's hardly got the opportunity to bat. Nisar, 3 for 5. Another one. Yes, definitely. This one will be hitting the leg stump. Gets another one, Nisar. 4th of his inning. This one was closer than the last dismissal. Kashif will have to go back. Good bowling. Brilliant depth bowling by Nisar. He's got his pace up. He's got the right line, right length. And he's testing the tail enders. You cannot blame them. But he's spot on. That's what you want as a captain from your ace bowler. Definitely closer than the last one. He cannot add to those 2 runs of his career. 102 for 9. Right. Nisar is on a hat-trick. Look at the figures. 4 wickets. Just 5 runs given in 2.3 overs. Can we get an in-swinging Yorker? Marina, what do you say? I'm banking on Nisar. He deserves it. Come on, Nisar. Right. Oh, he's done it. He's done it. He's done it. Nisar has got the hat-trick. Bullseye. You miss, I hit. That's the 8th hat-trick in National T20. 4th at National Stadium, Karachi. And he's done it for his team. He's won the game for his team. Beautiful bowling. Can't get better than this. Nisar, 3 deliveries. Right line, right length, right pace. And that was a superb hat-trick delivery. It was made sure that he earned that hat-trick and he deserved it thoroughly. Have a look at that. No feet movement, was nowhere near the ball. Clipping off stump. That is brilliant. 5 for 5 his figures. The best we have seen anyone bowl here at National Stadium, Karachi. And he's won the game for his team. The West End were the last man to go. Rawalpindi has been bowled out on 102 runs. And what a way to finish the game, and what a way to get your first victory in this Super 8 for Lahore Blues. And it's Nisar Ahmed, the superstar at the moment, got the hat-trick, got a fifer. Brilliant, absolutely brilliant. Yeah,
He's the dream pacer for any captain, and Hussain Talat will be happy. How he finished things off, that was brilliant. Winning by 64 runs. But you have to give credit all round, especially starting with batting. Lahore Blues have started to find their bits and pieces. Good partnership of Qasim and Hussain Talat, and then brilliant bowling. Usman Qadir, yes, he was unlucky, but Nisar, that was a dream match for him. And I like he's so humble. Come on, celebrate. You've got a hat-trick. You've got a fifer. He's just reacting as if nothing has happened. He's so humble. If I had taken a hat-trick, I would be all over the place, running around in the ground. But this boy is so humble. He deserved it. He's bowled beautifully. There is the man. Superstar. Nisar, 5 for 5, his figures. And I'm loving how Usman Qadir has been very vocal in celebrating with him. The Lahore Blues have done it in style, finally finding their path back probably to this tournament, the Super 8 stage. But again, that was some brilliant bowling, death bowling at its best by Nisar. Rawalpindi, well, you cannot blame anyone else but themselves. Yasser, huge expectation was there, but he went without scoring. Zishan, Umar, Heather, game looked $1 million, but again, never really converted that start. 23 for him, Mubassir 24, Nawaz, again a big name, but with minimum effort, 15 for him. Raza, 14 not out, and then it was all Nisar in the scorecards. What a bowling unit. Everyone chipping in. Umayyad Asif to start a 1 wicket for 19, 1 wicket for Kashif Bhatti, 2 for Usman. Probably should have gotten more wickets than this. Many catches were dropped off his bowling, but one man stands out. One man shines here at National Bank Stadium. Has taken 5 wickets after giving away only 5 runs with 12 dot deliveries. Marvellous, sensational performance by Nisar. .167 was the target to be chased. Started off well, probably not for Rawalpindi straight. Yasser Khan went away, and then this was a very irresponsible shot. Trying to take on, Umar Amin had to walk back to the dugout. This trying to sweep Nisar, I don't know what he was thinking. But again, the shot selection was very vivid. Heather Ali, he looked really good, but missed out on this one. Trapped right in front of stumps. Never did they find any momentum. Easy catches were dropped, but still the wickets kept on coming. Just find the distance, really couldn't find the distance. The elevation was there, but it was struggle all over for Rawalpindi. That was bullseye. Fielding was spot on to some extent, but when we talk about pace bowling, Nisar stood out. And the thing I liked about these 3 deliveries, the hat-trick deliveries, all of them were wicket-taking. Targeting the stumps. That's how you get a hat-trick. He's definitely not sleeping tonight. 166 Lahore Blues scored after losing just 3 wickets. Hussain Talat scoring vital 42 runs. Qasim Akram with some runs, 40 he scored. Imran Bhatt 39. Imran got 2 wickets for Rawalpindi. And in reply, Rawalpindi were bundled out on 102. Mubassir scored 24, Heather 23, and it was that man Nisar Ahmed 5 for 5, including a hat-trick. Usman Qadir 2 for 19, Kashif Bhatti 1 for 14. Lahore Blues winning the game by 64 runs. Look at that, from bottom of the table they have jumped up to number 5. That's what 1 wicket does. 4 matches, 1 win. The net run rate has improved also with this huge margin. Rawalpindi has dropped down to number 3 after this loss. Aptabad has jumped up to number 2 because of the net run rate. It's getting very interesting. This win from Lahore Blues, it just opened up this points table. Right, let's have a break. We'll come back with presentation ceremony.
Hello and welcome to the post-match presentation. It's been a good day for Lahore Blues. They've won this match by 64 runs, leaving Rawalpindi behind. Congratulations to them, the team and the squad. Now, before we give away individual awards, I'd like to introduce the people next to me. Part of the presentation party, Mr. Abdul Rahman, Assistant Manager, Admin, National Bank Stadium. Thank you for joining us. And Mr. Azhar Hussain Zaidi, he is Manager, Lahore Blues. Thank you for being here. I'll request Mr. Azhar Hussain Zaidi to please present the AH Group Outstanding Performance of the Match Cash Award of 25,000 to the captain of Lahore Blues, Hussain Talat, for his 42 of 32 balls. 42 का स्कोर 32 गेंदों पे शानदार परफॉर्मेंस लाहौर ब्लूज के कप्तान हुसैन तलत की, जिन्होंने 85 की पार्टनरशिप लगाई थी अपने साथी कासिम अकरम के साथ और एक अच्छा स्कोर बनाने में कामयाब रहे एज अ टीम. Now, I'll request Mr. Abdul Rahman to please present the Jazz Player of the Match trophy and cash award of 25,000, and that goes to Nisar Ahmed for 5 wickets for just 5 runs in his 2.1 overs. Also had a maiden in it. Superb performance, is some kind of a record in T20. 5 wickets, 5 runs देके 2.4 overs में एक maiden भी शामिल था. Jazz Player of the Match trophy and cash award for Nisar. Nisar से बात भी करेंगे. आ जाएं, ये सब कुछ इसके साथ लगा दे. निसार, शानदार परफॉर्मेंस रही. आपने जब टीम को ज्वाइन किया सलमान की जगह पे तो काफ़ी बिग शूज टू फिल थे. किस तरह से प्लानिंग की थी आपने कि मैंने जगह बनानी है अपनी? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे मौका मिला और मैंने परफॉर्म किया इस मैच में. और सेकेंडली प्लान यही था कि पिच को देख के, जैसे फ़र्स्ट टाइम पिच खेल रहा था थोड़ा बॉल लो रह रहा था और जो मतलब कि स्लोअर वन था वो फंस रहा था, बाउंस भी मिल रहा था थोड़ा थोड़ा जो कटर्स. इसलिए मेरा प्लान था कि आगे बॉल करूँगा और स्टम्प्स को हिट करूँगा और उसी प्लान पे मैंने वर्क किया जिस पे मुझे कामयाबी मिली. इस तरह की परफॉर्मेंसेस रोज़ होती नहीं. 5 विकेटें 5 रन. क्या बेसिक्स पे ज़्यादा जोर दिया था कि अगर कंडीशन सपोर्ट कर रही हैं, लो एंड स्लो है, तो मैं ज़्यादा बेसिक्स पे रहूँ? जी बिल्कुल, मैंने यही प्लान था मेरा कि मैं बेसिक्स पे रहूँ और अच्छे एरियाज को हिट करूँ और उसी पे मैंने अंदर इम्प्लीमेंट किया जिस पे मुझे कामयाबी मिली. बहुत शानदार परफॉर्मेंस, बहुत मजा आया आपकी बॉलिंग को देख के. इसी तरह कंटिन्यू रखें. थैंक यू Nisar Ahmed, the player of the match, and you can take everything of yours with you. All right, now I'll request the captain of Rawalpindi, Umar Amin, to please come and have a few words with us. उमर, इस मैच से पहले अभी तक रावलपिंडी सारे चेस कर रहा था आसानी से. आज कहाँ फॉल्टर हुए लगता है आपको? कहीं रन ज़्यादा चले गए या चेस सही नहीं हो पाया? वेल आई थिंक पिच को अगर देखें, जिस तरह मैंने टॉस पे बोला था कि हमें चाहिए था कि हम लोग उनको 150 पे रिस्ट्रिक्ट करना चाहते थे, लेकिन इनिशियली हमने पावर प्ले में इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की, इतनी अच्छी बैटिंग नहीं थी जितनी हमने बुरी बॉलिंग की पावर प्ले में. लेकिन उसके बाद एज अ बॉलिंग यूनिट हमने बहुत ज़बरदस्त कम बैक किया, उनको 167 पे रिस्ट्रिक्ट किया. उसके बाद जब बैटिंग स्टार्ट की तो आई थिंक बैक टू बैक जब आप विकेट्स लूज़ करें इस तरह का टारगेट चेस करने में तो थोड़ा टफ हो जाता है. आपके पास काफ़ी डिफरेंट वैरायटी है इन टर्म्स ऑफ 11 चेस करने वालों में. आपके पास फिनिशर भी है, मुबशिर भी है. क्या ज़्यादा इन्हिसार होता है पावर प्ले के स्कोर पर इन टर्म्स ऑफ चेजिंग, कि अगर वो अच्छा नहीं हुआ तो काफ़ी प्रेशर रहेगा, या आप कहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं T20 में चेज में आगे भी? आई थिंक हम लोग ना एक जब से शादाब आया टीम में तो वो एक हम लोगों से बात करता है कि हम लोगों ने एक इंटेंट के साथ खेलना है. और जो आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट की बहुत ज़्यादा बात होती है, हमारी टीम का मेन जो मोटिव है, हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग मॉडर्न डे की क्रिकेट की जो रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से खेलें. जो आज थोड़ा सा इंटेंट भी लैक था, आई थिंक वो मेरे ख्याल से वहाँ पे मिडल में जब 3 विकेट्स गिर गए थे तो थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा डीप लेकर चले गए. अगर उसको हमें उसी टाइम पे हम लोग अटैकिंग मोड में ही रहते तो डिफरेंट हो सकता था. आप लोग अभी भी टॉप 4 में हैं. इसको आप एज अ बैड डे एट ऑफिस कंसिडर करके भूल जाएंगे, या आपके कंसर्न्स होंगे एज कैप्टन कि मुझे एरियाज करेक्ट करने हैं? वेल जो गलतियां की हैं उनको कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट मैचेस में उनको रेक्टिफाई किया जाए. जो आज हम लोगों ने जो बेसिक्स अपने कुछ गलत की हैं, फील्डिंग में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है. बॉलिंग स्पेशली विद द न्यू बॉल, हम लोग पावर प्ले में एक स्टैट भी मैं देख रहा था जिसमें हम लोग सबसे लीस्ट विकेट्स हम लोगों ने ली हुई हैं. तो इस तरह की चीज़ें हैं जिनको थोड़ा सा हमें देखने की ज़रूरत है. ओवरऑल जिस तरह आपने बोला कि एक बैड डे एट द ऑफिस था, इस स्टेज पे आ गया टूर्नामेंट के दौरान. अगर लेटर इन द टूर्नामेंट जहाँ पे ये ज़्यादा मैटर करता तो वो ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता था. तो आई थिंक उस लिहाज से एज अ कैप्टन मैं सेटिस्फाइड हूँ कि चले जल्दी आ गया. Chale, hard luck today. Good luck for the games to come. Thank you very much. Umar Amin, the captain of Rawalpindi. Now, time to call in Hussain Talat, the captain of Lahore Blues. He'll be a happy man today. They've been waiting for a win. Hussain, शानदार परफॉर्मेंस रही. आज आपने बॉक्सेस टिक किए.
क्या ऐसी कोई एक चीज थी जो टीम को आपने कही थी इतने मैचेस हारने के बाद जिससे ये रिजल्ट आया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हम लोग पहला इस सुपर 8 में गेम जीते हैं। तो बात वही की थी जो मैच से पहले मैं बात कर रहा था कि हमारा जो पार्टनरशिप नहीं मिल रही हम लोगों को एज ए बैटिंग यूनिट। जो मैच हम लोग लूज़ भी किए हैं वो बड़े छोटे मार्जिन से और लास्ट ओवर्स में जाके हम लोगों ने लूज़ किए हैं। तो बात सिर्फ बैट्समैनों ने ये की थी कि हम जो कोई भी सेट हो जाए तो हम वो पार्टनरशिप को लंबा लेके जाएंगे। तो इस तरह मेरा ख्याल है उमर ने और इमरान भट्ट ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया, जिसकी वजह से हम लोगों को पुश किया और कासिम ने और मैंने उसको लंबा लेके गए और अच्छा टोटल हमें सामने मिला। 61 का पावर प्ले मिला, अच्छा स्टार्ट का आपने जिक्र किया। मिडिल में 3 विकेटें जरूर गिरी थी, लेकिन आपको लगता है एज अ कैप्टन कि यहाँ पे ये 3 फेजेस हैं मैच के, इसमें अगर आप कंटिन्यू करें आखिर तक तो आप अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं? आपने 150 160 मांगे थे टॉस के टाइम पे। बिल्कुल, हम लोगों ने लास्ट मैचेस में भी देखा कि बहुत सी टीमों को या हमें भी शुरू में स्टार्ट अच्छा मिला है, पर मिडिल फेज में कहीं ना कहीं विकेट्स भी जाती हैं और फिर सिंगल निकालना भी मुश्किल हो जाता है। तो कासिम और मैं ये बात कर रहे थे कि अगर कुछ डॉट्स आ भी जाएं, लेकिन अगर हम आखिरी ओवर्स तक रखें कि हम आखिरी ओवर्स भी हम लोग ही खेले तो हम एक अच्छा टोटल ले जाएंगे। 64 रन बड़ा मार्जिन होता है जीत का, लेकिन कहीं ना कहीं आप एज कप्तान कैचिंग से थोड़ा सा होंगे कंसर्न। बिल्कुल, हमें ज़रूरत भी थी, पर आगे वाले मैचों में जैसे अब मोमेंटम पकड़ा है टीम ने, तो इंशाल्लाह अगले मैच भी कोई ऐसे हम लोग जीते तो फिर क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए, गुड लक टू यू। थैंक यू। Hussain Talat, captain of Lahore Blues, has won this match by 64 runs, and that concludes the presentation.
very warm welcome back to National Bank Stadium. A comprehensive win there for Lahore Blues, a much needed one. Really batted well, and then they were clinical with the ball. A few lapses in the field, but overall they badly needed this victory, and they come up trumps against Rawalpindi. Well, we saw some great action tonight. A good score from Lahore Blues, and Rawalpindi capitulated under pressure. Some good bowling from Lahore, but more so Rawalpindi would be disappointed with the effort they put up with the bat. But in the end, like I said, Lahore needed that victory, and they got it. To discuss it with me and a lot more, I've got Marina alongside me. A very warm welcome, Marina. Thank you. And just summing up tonight's game, you see that where did Rawalpindi went wrong, or what was the key factors for tonight? I think you cannot blame anyone else but themselves, because if your top order short selection is like this, you have a big concern. Again, I think probably for Umar Amin, he tried to do something different. He tried to take a risk, but it did not pay off. But again, I think that it wasn't a bad surface to bat on. It wasn't a bigger target, given the fact they had a lot of potential in their batting lineup, a lot of experience as well. But the shot selection and the execution, that was very poor for them, and they actually dig a trench for themselves. No one else should be blamed. And you talk about the shot selection, and if we look at the Rawalpindi dismissal, quite a few of them will suggest so. Although in between there was some good bowling as well, but that wicket really didn't warrant for the kind of collapse they had. We can have those wickets, Marina. Go through probably for us. Umar Amin, he thought that he had that ball in his zone. This was very concerning for me, trying to play sweep shot off a fast bowler. This one obviously again trying to angle the bat way too early. He was beaten by the angle, and probably I think that they weren't clear about the role they were given and of which bowler they should be attacking. This was again, it was there, but he tried to elevate it, didn't find a distance at all, and again some superb fielding. You need to read your fielders as well, especially the ones inside the circle. But you have to give credit to Nisar. I mean, I love the way he bowled. That is brilliant death bowling. All the three deliveries on which he took hat-trick was wicket-taking delivery, targeting the stumps. That's what you want from your ace bowler. The death bowling was spot on. It was indeed, but in the middle phase, we all know that Usman is in great form. He took 5 wickets in the previous game. Once again, he bowled with beautiful control and put pressure. And we're grateful that Usman is alongside me. Usman, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का इतनी लेट नाइट. आपकी फॉर्म बहुत ज़बरदस्त है. पिछले मैच में 5 आउट किए. इस मैच में भी बॉल अच्छा रिलीज हो रहा था. अच्छा रिवॉर्ड मिला आपको. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी. लास्ट मैच में जैसे 5 आउट किए थे तो मेरा रिदम बना हुआ है. पहले मैच से जब मैं कैंप से भी आया था तो पहले मैच से जो है वो पहले मैच में 3 आउट किए, और उसके बाद जो है जो उनके खिलाफ मैच था कराची के खिलाफ, उसमें भी बड़े अच्छे कंट्रोल से बहुत जा रहा था. बट जब आज़म खेल रहा था तो मैंने कोशिश की कि बाय कर लूँ उसकी विकेट, बट अनफॉर्चुनेटली इसने बड़े अच्छे शॉट्स मारे. बट मेरा यही है कि मेरा ये कंसर्न था कि जो मेरे पे उन्होंने बोला हुआ था कि मेरा बॉल पीछे गिर जाता है या फुल टॉस हो जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने वर्कआउट किया, जो मैंने अपने हार्ड वर्क किया लास्ट 6 मंथ से, तो मुझे आई थिंक कि वो फील भी हो रहा है, और मैं आई एम रियली फील स्पेशल अबाउट लाइक कि वो जैसे मेरा बॉल जा रहा है. और हमें भी लगा, क्योंकि जितना आपके पास हुनर है, जो वेरिएशन आपके पास है, जिस तरह तेज़ आपका लेग ब्रेक घूमता है, तेज़ ही गूगली है, दुनिया में शायद ही किसी बॉलर के पास हो. तो वो ये कंसिस्टेंसी की जो स्ट्रगल है, ये क्या आपके ख्याल में आपको लगता है कि लंबी बॉलिंग करें, अगर ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन की क्रिकेट खेलें रेड बॉल, तो उससे कोई फ़र्क पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ सकता है, और मैं इसमें क्रेडिट देना चाहता हूँ अपने भाई को, जिन्होंने मेरे साथ बड़ी मेहनत की लास्ट 6 मंथ से, और कोन लगा के मुझे बस बोला कि इस पे बॉलिंग करनी है, टारगेट बॉलिंग की. मैंने काफ़ी टारगेट बॉलिंग की है, तो उसके जो है भाई ने जो है बस यही कहा था कि इस पे टारगेट बॉलिंग करो, आगे गिरे बॉल, पीछे गिरे, बस इसके ऊपर बॉल फेंकना है. तो आई थिंक कि बस मैं वो करता रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह 4 डे के अंदर भी जब लास्ट मैच खेला था उसमें भी 6 आउट हो गए. 1 डे में बहुत अच्छी बॉलिंग की, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो हो ही रही है अच्छी बॉलिंग. उस्मान, ऑब्वियसली आप एक बहुत बड़े आइकॉन हैं और आइडल हैं, काफ़ी लेग स्पिनर्स आपको फॉलो करते हैं, और सरफेस की बात करें तो स्पिनर्स के लिए बहुत रोल जो है सरफेस का होता है. जो स्लोअर विकेट्स होती हैं उस पर क्या लेग स्पिनर्स को करना चाहिए कि वो उनके लिए रिवॉर्डिंग हो?
आई थिंक कि मैं सरफेस को नहीं देखता, मैं कभी रीड नहीं करता सरफेस को। मुझे बस होता है कि कौन सा बैट्समैन खेल रहा है और उनकी क्या हिटिंग जोन क्या है उसका और क्या रिक्वायरमेंट है इस तरह। और जब मोस्टली ऐसा होता है कि मैं सरफेस को रीड नहीं करता, और जब मैं बॉल करता हूँ उसके बाद ऑटोमेटिकली मुझे पता होता है कि यहाँ पे तेज़ होगा बॉल या स्पिन होगा या स्लो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये नेचुरल है मेरे अंदर कि जब मैं बॉल करता हूँ एक दो बॉल के बाद मुझे आइडिया हो जाता है कि मैंने यहाँ पे तेज़ बॉल करना है या स्लो करना है। आज भी जो है बॉल जो था, जो मैं तेज़ कर रहा था वो लेग ब्रेक तेज़ जा रहा था, जो मैं छोड़ रहा था वो स्ट्रेट रह रहा था बॉल। तो मेरे ख्याल से जिस पे उसने छक्का मारा उसके बाद जो मैंने तेज़ बॉल किया वो टर्न भी हुआ काफ़ी, बट मैं विकेट लेने के लिए जा रहा था तो उसके बाद है वो विकेट भी मिली मुझे। और आपने आजम की बात की, पिछले मैच में अच्छा कॉन्टेस्ट था, जो पहला 6 मारा वो तो बहुत अच्छा बॉल था लेकिन वो शॉट अच्छी थी। फिर लगा नहीं आपको कि आपने एकदम ही उस तेज बॉल कर दी, वेरिएशन कर दी? अगर आप अपने उस पे एक ही प्लान को कुक करते ज्यादा तो वो ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है, आपकी क्या राय? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पहला शॉट तो उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी मारा। तो मेरे ख्याल से ये था कि T20 के अंदर बैट्समैन जो होता है वो दूसरे बॉल के लिए, मेरे जो ख्याल है कि वो हिट करने के लिए नहीं जाता। तो मैंने उसको स्लाइडर किया था, तो स्लाइडर जो था उसने बहुत अच्छा शॉट मारा, वो भी सामने छक्का हो गया। बट ये है कि आजम इज़ अ ग्रेट प्लेयर और PSL में वो पूरी दुनिया की लीग में स्कोर वगैरह करता है। मैं लेग स्पिनर अकेला नहीं हूँ, उसके साथ शादाब है, मैं हूँ, इमरान ताहिर भाई हैं, और दुनिया के जितने लेग स्पिनर वो सबको मारता है। तो मेरा ख्याल है कि जब भी आजम अब सामने आएगा तो मैं उसको कोशिश करूँगा, जो मेरा प्लान है उसके सामने जो है वो जस्टिफाई करूँ इंशाल्लाह। ऑब्वियसली लेग स्पिनर्स को हम थोड़ा एक्स्ट्रा कुशन भी देते हैं, लेकिन जहाँ तक रिदम की बात है, कितना ज़्यादा अफेक्ट करता है लेग स्पिनर के आप आएँ और शॉर्टर फॉर्मेट में स्पेशली, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम कम होता है। आई थिंक रिदम जो है वो बड़ा काउंट करता है, स्पेशली अगर आपका कैप्टन आपको सपोर्ट कर रहा है और आपको पता है, कैप्टन को पता है कि मैंने अपने स्पिनर से कब आउट करवाने हैं और मैंने उसको कब लेके आना है और उसे कब कंटेन बॉलिंग करवानी। तो आई थिंक कि मैं हुसैन तलत को भी क्रेडिट दूंगा कि द वे ही सेट के तुमने अब आके बॉलिंग करनी। जैसे आप देखें लास्ट मैच में मैं 10 ओवर के बाद आया था बॉलिंग के लिए, तो मेरे ख्याल से उसको यूज़ करना आता है लेग स्पिनर कि उनको कब किस टाइम पर यूज़ करता है। फ्रस्ट्रेशन की आपने बात की, तो कैसा लगता है जब आप बैटर को ट्रैप करते हैं, चांस क्रिएट करते हैं और वो कैच छूट जाए? आज भी ऐसा हुआ, और खास तौर पे जब बेस्ट फील्डर कैच छोड़ दें, कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है? आई थिंक मेरे ज़हन में बस यही था कि बोलें। आई थिंक कि बस मेरे जहन में यही था कि इमरान भट्ट जो है ही इज़ एक्सीलेंट फील्डर, तो मुश्किल कैच उसने कर लिया और आसान जो था उसके हाथ में से जो है वो लग के निकल गया। बट इट्स पार्ट ऑफ गेम, मैं जो है विकेट बाय करने के लिए जा रहा था बट हो गई विकेट, कैच छूट गया, नई नसीब में थी, नहीं मिली विकेट। और अभी भी स्पिनर्स के लिहाज से आप अपनी एज के प्राइम पे हैं, अपने करियर को कैसे देखते हैं? तीनों फॉर्मेट्स में क्या एम्बिशंस हैं आपके? मेरा गोल बस यही है कि मैं जितनी डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रेफर करूं और डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करूं। बाकी सिलेक्टर्स का काम है, मुझे पिक करते हैं नहीं करते, बाकी मेरा काम है परफॉर्म करना, बाकी अल्लाह के हाथ में इंशाल्लाह। ऑब्वियसली वेरिएशन बहुत ज़्यादा है आपके पास और आप डेवलप भी मजीद कर रहे हैं, तो थोड़ा सा रीड तो करते हैं आप ऑपोजिशन को, बट कितना ज़्यादा रोल रहता है वेरिएशन का और किस टाइम पे क्लिक करना है, ये प्लानिंग होती है या आपकी इंस्टिंक्ट है? मैं जब बॉलिंग के लिए आता हूं तो मैं सिचुएशन देखता हूं कि क्या अगर ऊपर के टॉप ऑर्डर के बैटर्स खेल रहे हैं तो मैं ज़्यादा पंगे नहीं लेता हूं, मतलब कि मैं वेरिएशन नहीं करता। मैं बस ये चाहता हूं कि वो स्ट्रिक्ट डॉट बॉल ज़्यादा खेले, सिंगल हो जाए, बस बाउंड्री बॉल जो है वो नहीं दूं। अगर तब थोड़ा सा नीचे आ जाए, 4 पे 5 पे 6 पे आ जाए, फिर मैं वेरिएशन के लिए जाता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप उस टाइम आके 1-2 आउट कर दे तो फिर वो दूसरी टीम जो है वो सोचती है कि यार अभी आउट हो गए तो थोड़ा सा नीचे नीचे खेलते हैं। तो मेरे ख्याल से मैं जब भी बॉलिंग के लिए आता हूँ तो अगर टॉप ऑर्डर खेल रहा है तो डिफरेंट बॉलिंग करता हूँ और जब नीचे वाले खेल रहे होते हैं तो डिफरेंट बॉलिंग करता हूँ। चलें उस्मान, इतनी लेट आपने हमें इतना टाइम दिया, आपके लिए बहुत शुक्रिया और बहुत ज़बरदस्त आप बॉलिंग करें। ऑल द बेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Usman. And Manira, thank you to you as well for staying up so late. Just to remind our viewers that tomorrow is the rest day. The action will resume day after tomorrow and we'll come back with more action from National Bank Stadium. There's a couple of games coming your way day after tomorrow. Peshawar versus Abbottabad and Karachi versus Sialkot. And these will be coming to you from National Bank Stadium. Once again, thank you very much for staying with us. We hope you enjoyed our coverage and we look forward to your company in a day's time. It's good night from National Bank Stadium. That's high in the air and a chance to catch it. Yes,
opportunity. This could be trouble. Qasim Akram takes the catch. So good and so authoritative. One on the onside, one through the covers. Round the wicket और हासिल कर लेंगे हैदर को. Over cover. The singles don't matter. It's another chance, and this time it's taken. Oh, that's gone. Should be gone. Yes. Another one. Yes, definitely. Come on, Nisar. Right. Oh, he's done it. Nisar has got the hat trick. Bullseye.